Very good afternoon, sir. very good afternoon, sir. सर आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay, sir. Sir, welcome to the NEP Day 3 of session. Malvi Mission Teacher Training Center, DAVV Vishwavidyalaya, Indore. Who will be introduced to, sir? Participants? Yeah. Any- Yeah, Santulan ji will do. Hello, everyone. Santulan ji will Yes. Okay, all participants are requested to please switch on your camera and you can mute your mic, please. Sir, you can go ahead. Should I start? Yes, sir. Okay. Naren sir, wait a minute. Santulan sir will be introduced. Then after you will start. Okay, sir. Okay, sir. Okay, Good sir. afternoon. I am Santulan Chaube, and it's my privilege to introduce Dr. Narendra Kumar ji. He is a distinguished academician and the researcher in the field of education. He currently serves as assistant professor and head of Department of Education at the Central Institute of Rajasthan. Dr. Kumar holds a PhD in education along with MPhil, MAd, and MSc in chemistry. He is also a qualified UGC NET, GRF, SRF, and SLET. With over 17 years of teaching and research experience, Dr. Kumar has made significant contribution in teaching, education, and educational research. His areas of expertise includes the methodologies, the educational measurement and evaluation, educational psychology, guidance and counseling, education planning and policy, and the chemistry pedagogy. His research interests span psychological stress, cultural intelligence, self-efficacy, science pedagogy, and the effective use of ICT in education. It's very, very critical nowadays. Dr. Kumar has an impressive academic records with more than 90 research publications and several books and chapters. The extensive experience in supervising research papers, he is a recipient of multiple honors, including gold medals and National Research Fellowship in recognition of scholarly excellence. Sir, we welcome you and we are very keen to listen to you and learn as much as possible. Thank you very much, sir. Welcome. Sir. Naren sir? Hello? I think sir is facing some networking issue. Wait a minute. सर कॉल पे है सर, एक बार चेक करिए है सर. सर मीटिंग में तो है बट एक्चुअली वो आई थिंक अच्छा हो सकता है म्यूट है. मैं ओके. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. You are audible and visible also. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much for a nice introduction. I would like to share about the mission of this National Education Policy 2020 Sensitization and Orientation Program. Actually, this NEP 2020 is a very significant document for the education sector in the country, and we all are trying to sensitize the faculty members of higher education institution as well as the prospective faculty members. Means those are the research scholars and are engaged in their research activities, and they will be
the good future teachers of the country in higher education. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. May I request 2-3 participants to unmute your camera so that we can have a good interaction? Because if the session will be more and more interactive, then it will be comfortable for the resource person also. Hello. Some of the participants can unmute. Good afternoon, sir. Yes. Yes, thank you so much. Thank you so much. Actually, we will talk about the learning diversity, diverse learners. So first, may I request from the participants, would you share your viewpoints about a very common thing, teaching. What is teaching? Because learners diversity is a very important aspect for a teacher. In a classroom, we are having the students, those are diverse actually. So when I will come on the topic, before starting, I just want to have the viewpoints of the participants. What teaching is actually. Any participant, please. So for me, the teaching is the communicating the message to the students, communicating the knowledge, transferring the knowledge to the students in a way that they can understand. Okay, very good. और कोई? You can say facilitate learning. Okay. Or Simplifying the knowledge of the discipline from which the disciplinary interactions, and I think also developing certain skill sets is what I understand by teaching. Thank you for asking such a meaningful question. actually, the participants are from Ambedkar University itself or from other institutions? The diverse again from a lot of places. Okay. Actually, when either we are in a department or in of a university or we are in the departmental meeting of an institution, college. Suppose we are introducing a new program, 4-year UG program, or already a UG program is running in my institution. So again, I will ask, what are the things that come first in our mind when we are assigned a course to teach? तो क्या चीजें हैं जो हमारे दिमाग में एकदम आती हैं जब हमें कोई कोर्स पढ़ाने के लिए कहा जाए? May I come in? Yes. Am I audible? Yes, sir. So first thing is that what the course requires and how I am going to transact that course in an environment where I will have diversity of students reflected through their own personal experiences and journeys so far. And in that context, what becomes important is partially related to your first question, is that to impress upon students the approach which they need to critically engage with the material which is being transacted in the class. So communication of knowledge, as others have emphasized, and also the aspect that as a teacher, what you want for the students, but it's a collective journey in that sense. So you take them in a participative manner such that each one hears out each other and have critical reflections on the content along the way. And then the larger learning outcomes from that interaction unfolds in the enabling environment of the class. I think that's what I would like to say at this juncture. Okay. Anyone और कोई कुछ कहेगा? May I know कि from the participant side, who is from the education department, either research scholar or the faculty member?
I'm from Education Department. I'm Shivani from Ambedkar University. You are research scholar or faculty member? I'm a faculty at School of Education. Very good. So, Very good. Hanji. So while responding to your question, I think one of the things we also consider, especially when we are teaching, say at a master's level, is also who the learner is, for us to know in which language would the communication go. Also in education, suppose in our master's course, students could be actually coming from different disciplines. किसी का psychology का background है, किसी का sociology का है. तो अगर मैं understanding development का course पढ़ा रही हूँ, what are the expectations that I can have? For how many I will need to pitch it at the very basic level? For how many who would need some kind of an advanced challenge? So to also kind of keep in mind who the learner is in terms of their context, so one can think of relatable examples, how to make use of bilingual or a multilingual approach. So in that sense, the learner also becomes quite important to keep in mind when one is thinking of pedagogy. Thank you so much, ma'am. Suppose you are having a 4-year program and you are in the departmental meeting, your head and dean, they are doing the course distribution. And you will have a particular course to teach. You are assigned to teach. So the first that will come in mind is the content. We just go through the syllabus. मुझे कोर्स मिला है, मुझे क्या पढ़ाना है, what to teach actually, मुझे क्या पढ़ाना है, ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि what to teach. Ultimately, in any program, we are having program outcomes. कि after completion of 8 semesters of teaching and learning, we expect from our students कि graduate student will reflect these things in their behavior. They will be able to reflect these things. These are our ultimate aim. These are our program outcomes. To achieve these program outcomes, we have various courses in each semester. Suppose in first semester we are having 4 or 5 courses. Every course is having some content and every course is having some course outcomes. And courses may be of major courses, it may be minor courses, maybe ability enhancement courses, it may be value-added courses, and as per National Credit Framework, internship is mandatory now of 2 credit or 4 credit in every program, but whether it is UG program or PG program. So there are various courses, and every course is having separate course content. And every course is having course outcomes. One course may be of 4 credits. You will have to interact with the student for 60 days. Some of the courses may be of 3 credits. Some of the courses may be of 2 credits. Then, when you are assigned a course, you will go through the content. I think for me, for Shivani ma'am, she may have a course of 4 or 5 units of 4 credits. Then she will go through the 4 units. Then you will go to the course outcomes. What will happen after 60 days of teaching and learning? I will have the interaction with my students for 60 days to complete this 4 credit course. What will happen? Why I will teach? So the first important aspect of pedagogical analysis is, this is called pedagogical analysis. What to teach? Then why to teach? क्यों पढ़ाना है? क्या पढ़ाना है? ये 2 चीज हर टीचर जानना चाहता है. Whenever a course instructor is assigned a course, he will go through the content, he will try to know the nature of the content, then he will try to know the objectives of the content, course outcomes, why I will teach these 4 units, why I will interact with the students for 60 days regarding these 4 or 5 units. So every course is having course outcomes and we have to plan everything to achieve these course outcomes. तो शिवानी मैडम के अपने अलग कोर्स कंटेंट के कोर्स आउटकम्स हैं, मेरे अपने कोर्स के अलग कोर्स आउटकम हैं. इस तरह से हर सेमेस्टर के 4 या 5 कोर्सेज when we are teaching, every course is having unique course content and unique course outcomes.
इसी तरह सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर, फिर फोर्थ सेमेस्टर, फिर फिफ्थ सेमेस्टर, फिर सिक्स सेमेस्टर, फिर सेवन सेमेस्टर, फिर एट सेमेस्टर. Every course is having separate course content and separate course outcomes. You have to be very much sensitive regarding the course content and the course outcome. Now, am I audible? Yes, sir. Okay. जी सर. तो हमें अब क्या करना है? मोहन सर को एक कोर्स मिला है 60 डेज पढ़ाने के लिए, 4 क्रेडिट का कोर्स है. अब आपको क्या करना है? पेडागोजिकल एनालिसिस करना. पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब है, एक्चुअली पेडागोग मींस ए पर्सन हु लीड द चाइल्ड, इसलिए इसको पेडागोजी वर्ड यहीं से लिया गया, पेडागोगस. तो पेडागोग होता है ए मैन, ए पर्सन हु लीड द चाइल्ड. तो हम लीडर हैं, वी आर द लीडर इन द क्लासरूम. वी हैव टू प्लान एवरीथिंग. वी हैव टू प्लान हाउ वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस एंड हाउ वी विल अचीव द कोर्स आउटकम्स. अल्टीमेटली हमें अपने कोर्स आउटकम अचीव करने हैं. जब मोहन सर अपने कोर्स के आउटकम अचीव करा देंगे बच्चों को, शिवानी मैडम करा देंगी, मैं करा दूंगा, सब कराएंगे. पहले सेमेस्टर के 5 कोर्स हम मेहनत करके पढ़ाएंगे, तो बच्चों को इंडिविजुअल कोर्सेज के कोर्स आउटकम अचीव हो जाएंगे. और ये कोर्स आउटकम, दीज कोर्स आउटकम विल मैप विद द प्रोग्राम आउटकम्स. तो जो हमने 15-20 प्रोग्राम आउटकम्स बनाए हैं 8 सेमेस्टर के, पूरे 4 साल के प्रोग्राम के, उन कुछ प्रोग्राम आउटकम्स को पहला कोर्स अचीव करेगा. पहले कोर्स के कोर्स आउटकम अचीव करेंगे तो 1-2 प्रोग्राम आउटकम अचीव होंगे, दूसरे कोर्स से अचीव होंगे, तीसरे कोर्स से. जब आप वैल्यू एडेड कोर्सेज पे आ जाओगे, माइनर कोर्सेज पे आ जाओगे, कम्युनिटी एंगेजमेंट पे आ जाओगे, इंटर्नशिप पे आ जाओगे, उनका अपना डिफरेंट कोर्स है, उनका कंटेंट अलग है, उनके कोर्स आउटकम अलग है. वे भी हमारे प्रोग्राम आउटकम को अचीव कराएंगे, क्योंकि प्रोग्राम आउटकम है अल्टीमेटली द टर्मिनल बिहेवियर ऑफ अवर स्टूडेंट्स. एक तो एंट्री बिहेवियर होता है जब बच्चा प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, एक टर्मिनल बिहेवियर होता है जब बच्चे को डिग्री दी जाती है. तो व्हाट विल बी द टर्मिनल बिहेवियर? वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, टू कीप इन द माइंड द टर्मिनल बिहेवियर, अल्टीमेट प्रोग्राम आउटकम्स. वी हैव टू प्लान फॉर अवर टीचिंग. तो हम वो प्लान करते हैं. और कब करते हैं? इसलिए मैंने पूछा था कि व्हाट इज टीचिंग. तो मैंने टीचिंग के आंसर्स लिए, व्यू पॉइंट्स लिए, सबकी व्यू पॉइंट से आई एम स्ट्रांगली एग्री. बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग इज द इंटरेक्शन. Teaching is the interaction between two personalities. One is more mature and others are less mature. Without interaction, there is no teaching. तो हमें क्या करना है? इंटरेक्शन प्लान करना है. और कब करना है? There are 3 phases of teaching. I am sure Shivani madam is having the exact knowledge of the teaching process. There are 3 phases of teaching. One is pre-active phase, second is interactive phase, and third is post-active phase. And the first phase is very important, pre-active phase. Pre-active phase means this is planning phase. We have to plan either at our home or in our cabin before going to the classroom. When we plan for the entire year, this is called year planning. As per the academic calendar of the institution, as per the academic calendar of the university, we have to plan our year's activities. This is called year planning. If there is a semester system, we have to plan for the entire semester for 60 days. What I will do in 4 credit course for 60 days? What is my planning? कब मैं CIA 1 लूंगा, कब मैं CIA 2 लूंगा, कब एकेडमिक ब्रेक आएगा, कब दिवाली ब्रेक आएगा, कब सेमेस्टर ब्रेक आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप 60 डेज की प्लान करते हैं. When you will go through the syllabus, you will have 4 or 5 units. Then you will make unit planning. The first unit will require 5-6 lectures. Second unit will require 10 lectures. Third unit will require 5 lectures. As per the content, you will plan for your units. This is called unit planning. But when you are going to teach tomorrow, you are at your home, you have to plan. This is called the planning phase, pre-active phase. You are in your cabin and you are going through the first content of your first unit. Tomorrow is your first class. So what you will do? This is called pedagogical analysis. And this diversity
जो मुझे टॉपिक असाइन किया गया आज पढ़ाने के लिए, इस पे आने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर प्री एक्टिव फेज में क्या करता है। जब हम अपने केबिन में होते हैं, व्हाट वी प्लान एक्चुअली, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। द फर्स्ट इज व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है। कल मेरा लेक्चर है 60 मिनट का, मुझे क्लास में जाना है, सेकंड सेमेस्टर की क्लास है, तो 60 मिनट्स का मेरा क्या कंटेंट है, ये मैं सबसे पहले प्लान करूंगा। व्हाट टू टीच, दिस इज कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस। व्हाट टर्म्स आई विल यूज, what facts I will share with the students, what the theories I will use, what are the concepts I will try to make understand to my students, what are the examples I will try to illustrate, what will be the generalization I will make in the classroom. These are called content analysis. Content analysis means you have to break down the content in logical sequence. जो भी मेरा 60 मिनट का कंटेंट है, इसे कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। मींस ब्रेकिंग डाउन द कंटेंट इन लॉजिकल वे, लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल मैनर। और इसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मे आई आस्क फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द लर्निंग टीचिंग सीक्वेंस। जो जो हम करते हैं क्लासरूम में, दिस इज कॉल्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। So what should be the teaching learning sequence? What are the principles of teaching? Any participant, please. Any participant, please. Shivani ji, you may please. Yeah, I mean, there could be multiple ways of the sequencing, but first you introduce something, see how familiar students are with it. Try to ascertain कि उनका existing कुछ familiarity है या नहीं है. You introduce, then you invite them, maybe some kind of a formative assessment to see where they are. This is very good, very good. Actually, we have to, when we are planning for tomorrow's class, we have to implement, or we have to use the teaching principles actually. Then we will break down our content for tomorrow's 60 minutes of class. And the principles of teaching is known to unknown, simple to complex, concrete to abstract. आपने देखा होगा एनसीईआरटी की किताबें जो हैं, एनसीईआरटी की वो जो किताबें पब्लिश होती हैं, बनती हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। पहले नोन पहला चैप्टर होता है, फिर अननोन की तरफ बढ़ते हैं। In the same way, when we are planning in our pre-active phase for tomorrow's class, we will use the principles of teaching and we will break down our content for 60 minutes from known to unknown, from simple to complex. I am strongly agree with Shivani ma'am, because we have to know the present status of our students' understanding before going for the topic. तो पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हुआ प्लानिंग का, वो हुआ व्हाट टू टीच, मींस कंटेंट का एनालिसिस, कि 60 मिनट्स मुझे क्या पढ़ाना है, उसको हम एनालाइज करते हैं। द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज व्हाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है। इट मींस व्हेन वी आर हैविंग ए पर्टिकुलर कोर्स, if this course is having 4 or 5 course outcomes, these 4 or 5 outcomes we will achieve after 60 days of teaching and learning, because we are having 4 credit course. We will have to interact with my students for 60 days. After 60 days of teaching and learning, I can say that my students have achieved these 4 or 5 outcomes. But tomorrow again you are having a particular topic to teach, and tomorrow's content again is having some specific learning outcomes. After 60 minutes of teaching, what will be the behavior of a student? What we will expect from our students after 60 minutes of my class? This is a specific objective of the day. कि मेरा जो कंटेंट है, जो मैंने प्लान किया कल मुझे क्या पढ़ाना है, तो उसका मुझे ये भी लॉजिक साथ में रहेगा, क्योंकि एवरी कंटेंट इज हैविंग सम लॉजिक बिहाइंड, कि क्यों पढ़ाना है। तो वो जो क्यों पढ़ाना है, वो दिस इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे। तो ये प्लान करेंगे आप।
Third important aspect is how to teach. अब ये भी आपने तय कर लिया कि क्या पढ़ाना है, ये भी तय कर लिया कि क्यों पढ़ाना है. अब आपको ये प्लान करना है कि कैसे पढ़ाना. This is the third important pedagogical operation. When we are doing pedagogical analysis one day before, we have to plan. और इसको प्लान करना और इसको प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल. तो मैं अगेन आई विल आस्क फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, बिकॉज नाउ वी आर talking about how to teach, means methods of teaching. What is the best method of teaching? अभी शिवानी मैम तो बताएंगी, बिकॉज शी इज फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट. शी इज द एक्सपर्टाइज. शी इज training to the students those are enrolled in the ITEP program or B.Ed program, BSc B.Ed, BA B.Ed, or MA education, or M.Ed or B.Ed. They are there to prepare the prospective teachers for the nation. So she knows actually. She is expertise in training the teachers how to teach their particular subjects. Economics पढ़ाने वाले का, साइंस पढ़ाने का, सब स्पेशलाइज्ड पेडागोजिकल टीचर्स होते हैं. उनकी अपनी पेडागोजी ऑफ साइंस होती है, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस होती है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होती है, पेडागोजी ऑफ हिंदी होती है. बट इंस्टीड ऑफ शिवानी मैम, if the participants are from other disciplines, they should come forward. I just need the viewpoints of other participants about what is the best method of teaching. And if the research scholars are there, so they should be very much attentive here, because that when they will face the interview for in selection committees, these type of questions will be asked. You are going to be a teacher in a higher education system, so what will be the best method of teaching? Such type of questions are raised by the selection committee. और वैसे भी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में तो अभी रिक्रूटमेंट होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट आ गया बहुत बड़ा. तो शिवानी जी के साथ लोग आएंगे ज्वाइन करने. तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? Sir, as I am from vocational education and my field is tourism and hospitality, according to me, activity-based learning is the best way to teach a student. वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे. और कोई? सिंघदा विष्णोई मैम, आप कुछ बताएंगे? एड ऑन कीजिए. Thank you, sir, for asking. I have always enjoyed field pedagogy. So taking students to field and then making them understand through this particularly methods of observation and engagement with the real life factors. I think this is something that I have enjoyed doing. I'm also trained in anthropology. So being trained in anthropology, field work, and ethnography, and all these things, I think particularly if I can talk about teaching research methods. So how to do social research, how to engage with the communities that they want to analyze their social life from. So being on field is something, one way that I have found teaching as in field teaching as a method, as something which is robust. Very good, very good. और कोई? दो मेथड हमें मिले, एक फील्ड बेस्ड मिला, एक एक्टिविटी सेंटर्ड मिला. अब देखो, एक दो लोगों ने अनम्यूट किया ना कैमरा, तो सेशन इज इंटरेक्टिव. अदरवाइज I will feel I am talking with my mobile or my laptop, my screen. 3 participants I would like to thank at the end of my session. Only because of these 3 participants, I may have the interactive session. As per my understanding, when such type of questions are asked, what is the best method of teaching? The answer should be every method is good. There are so many methods. We are having various methods in our basket, and every method is good. Every method is having some limitations also.
It depends upon the content actually, what the content demands, है ना। अब जैसे विष्णोई मैडम ने बताया कि मैं फील्ड एक्सपेरिमेंट में लेके जाती हूँ, every content cannot be taught by the field experimentation. If a content requires demands for the lecture, we should give the lecture. If the content demands for the demonstration, we should demonstrate. If the content demands for the experimentation, we should go into the laboratory. If the content demands for the discussion, we should make the discussion in the class. If the content demands for the field visit, we should go into field visit. Actually, it demands upon the depends upon the content की nature क्या है. And in the 60 minutes of our teaching learning process in a class, we can use 2, 3, 4 methods in a day. It is not necessary कि आपने पढ़ाने के लिए जब क्लास में गए तो आपने लेक्चर मेथड डिसाइड कर लिया एक दिन पहले घर पे बैठ के और 60 की 60 मिनट लेक्चर मेथड से ही पढ़ाते रहे. It is not. You can use various methods in a day of 60 minutes of your class teaching. सब मारे किसी का अनम्यूट है ऑडियो, अगर वो बंद कर ले तो थोड़ा सोनभद्र में फिर कहाँ कहाँ या वो अपना कोई सजेशन दे रहे हैं. जी, एक और पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट. थैंक यू सो मच साक्षी मैम. तो एज ए टीचर वी हैव टू प्लान कि व्हाट टू टीच, व्हाई टू टीच एंड हाउ टू टीच. क्या निकाल दिया थे? ये सर जो बोल रहे हैं ना, इनको थोड़ा म्यूट किया जा सकता है क्या? सर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा अच्छा, जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. तो हाउ टू टीच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और जो ये टॉपिक मुझे मिला है लर्नर्स डाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू टीच के लिए. तो हमने कहा कि 60 मिनट्स की क्लास में जरूरी नहीं है हम पूरी 60 मिनट लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे. ये भी जरूरी नहीं है कि हम 60 मिनट्स डेमोस्ट्रेशन ही करेंगे. It depends upon the content that we have to teach. The content will demand, if you are having first 10 minutes of content that requires the demonstration, you should demonstrate. After 10 minutes of your teaching, if the content requires for the discussion, you can discuss in the classroom. If it requires for the PPT presentation, you can make this as a slides on your PPT. If it needs question answers, so you should use question answer method. So it depends upon the content, what the content demands. Otherwise, every method is good. और हर मेथड हर कंटेंट पे लागू नहीं हो सकता, है ना. अब हम बात करते हैं हाउ टू टीच की दूसरी एस्पेक्ट्स की, जिसमें आपका लर्निंग डाइवर्सिटी की बात है. एक्चुअली डाइवर्सिटी क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, I think some of the participants are from psychology. Galton, 1870s में, he was the first man who started to study कि two human beings cannot be the same. 1870 में उन्होंने काम करना शुरू, and he gave the concept of individual differences, कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस होता है. उसके बाद बीने साहब आए. बिने ने 1905 में जो अपना बिने स्केल दिया, मेंटल एज की कंसेप्ट दी. मेंटल एज की कंसेप्ट के बाद उन्होंने मानसिक योग्यताओं पे बात की, आईक्यू पे बात की. फिर टर्मेन ने उनके स्केल को रिवाइज कर दिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उस स्केल का नाम पड़ा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. आईक्यू कंसेप्ट दी स्टर ने और आईक्यू का फॉर्मूला दिया टर्मेन ने, MA/CA into 100. MA means mental age that is given by Binet and the chronological age, real age into 100. तो IQ निकाल ली. तो शुरुआत की गाल्टन ने, फिर धीरे धीरे लोगों ने वेरियस कंस्ट्रक्ट एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी स्टडी करना शुरू किया कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते. किसी की IQ बहुत ज्यादा है
टर्मेन के क्लासिफिकेशन से शिवानी जी की जो आईक्यू है वो 140 से ज्यादा है, तो वी कैन से शी इज द गॉड गिफ्टेड, शी इज द जीनियस। मेरी आईक्यू 25 से भी कम है, लेस देन 25, तो आई मे बी कॉल्ड इडियट, डल बुद्धि, जड़ बुद्धि। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन गिवन बाय द टर्मेन, एंड द 90 to 110 आईक्यू वाले को कहा उन्होंने एवरेज आईक्यू। तो इन योर क्लासरूम स्टूडेंट्स में हैव you may have the students of high IQ, God gifted, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिभाशाली छात्र, जीनियस छात्र, और आपकी क्लास में बच्चा ऐसा भी होगा जो जड़ बुद्धि है, मेरे जैसा लेस देन 25 IQ। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स एवरीवन इज यूनिक, हर कोई यूनिक है। साक्षी जी की पर्सनैलिटी अपनी अलग पर्सनैलिटी है, चंद्रेश मैडम की अलग है, शिवानी मैडम की अलग है, रोबिन सर की अलग है, मेरी अलग है, आकांक्षा जी की अलग है, अंशिका जी की अलग है। एवरीवन इज यूनिक, एंड एज ए टीचर वी शुड एक्सेप्ट दिस एंड वी शुड रेस्पेक्ट दिस। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इस चीज को रेस्पेक्ट देंगे तो वी विल हैव ए गुड क्लासरूम। एवरी स्टूडेंट शुड फील कि आई एम वेलकम्ड इन द क्लासरूम ऑफ शिवानी मैम, आई एम वेलकम्ड इन द क्लासरूम ऑफ साक्षी मैम। ये फील डेवलप होनी चाहिए बच्चे के अंदर कि आई एम वेलकम्ड, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, हिज पर्सनल एबिलिटीज। एवरीवन शुड फील दिस कि आई एम वेलकम्ड इन द क्लासरूम, बिकॉज बहुत सारे स्मार्ट टीचर होते हैं, मे भी शिवानी मैम हो सकती हैं ऐसी, मैं तो अपने पे ले लेता हूं, हो सकता है मैं हूं ऐसा। वी आइडेंटिफाई द स्मार्ट स्टूडेंट्स, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्लास में, और हम अपना सेशन जब पढ़ाना शुरू करते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं और वो बोलते रहते हैं यस मैम, यस सर, यस मैम, यस सर, एम आई राइट, वो बोलेंगे यस सर, यस सर, और ऐसे बोलते बोलते हम अपना सेशन कर लेते हैं। क्या होता है, क्योंकि हर टीचर क्या चाहता है, हर टीचर चाहता है कि उसकी सेशन इंटरेक्टिव बने, जैसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करके इंटरेक्शन करता हूँ, हर कोई ये चाहता है कि हमारा सेशन इंटरेक्टिव बने। क्योंकि एवरी टीचर, if you want to be an effective teacher and you want your teaching should be more and more effective, so you will try to involve your students, and we should involve our students. We should have the involvement and participation of your students in your teaching. तो वो जो स्मार्ट टीचर हैं वो तो 4-5 फ्रंट लाइन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनसे इंटरेक्शन करते रहते हैं और अपना सिलेबस भी टाइम से पूरा करते रहते हैं, है ना। लेकिन बिकॉज दिस इज नॉट अवर job, teaching is not a job, teaching is a service, ये सेवा है, this is obligatory. If we are in the teaching profession, so every profession is having some ethics, है ना। May I ask from the participants what we know about the ethics? Chandresh ma'am, Sakshi ma'am, what is ethics actually? Am I audible? Sir, there are many ways to explain ethics, like when we are very transparent in our way, ethical way, like impartial, regardless our student is intelligent or not so much intelligent, we should give the equal like opportunity to everyone. So there are many ways to explain ethics from my Okay. point of view. Thank you so much. Thank you so much. Actually, ethics are the guiding principles that govern our behavior. वकीलों के अपने अलग एथिक्स हैं, डॉक्टर्स के अपने अलग एथिक्स हैं, हर प्रोफेशन के एथिक्स, इसलिए से कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। तो टीचर्स के अपने एथिक्स हैं। दीज आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स
and these principles govern our behavior. So as a teacher, we should be obligatory, because this profession is for service, not for the only job. And we should be obligatory, and we should have the obligations towards our students, not only for frontline students, to all 50-60 students of the classroom. We should have the obligations towards the parents of the students. We should have the obligations towards the institution. We should have the obligations towards the colleagues. We should have the obligations towards the community and the nation. Because we are in the classroom not only to teach them physics, chemistry, math, geology, botany, Hindi, English. We are there for their all-round development. इसलिए NEP 2020 is strongly recommending 360-degree assessment. 360-degree assessment means scholastic as well as co-scholastic. सन 2000 के बाद एक कंसेप्ट आई थी CCE, continuous and comprehensive evaluation. CCE means continuous assessment, and comprehensive means not only for scholastic aspects but for co-scholastic aspects also. So in the classroom, we are there not only to make our students scientist or Einstein. We are there to prepare the democratic countries के responsible citizens. और वो कब होंगे? जब हम सारी एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखें. सिर्फ कंटेंट की मास्टरी नहीं करानी है, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कराना है. आप अगर जानते हैं तो शिवानी मैडम डेफिनेटली शी नो ब्लूम टैक्सोनॉमी. ब्लूम टैक्सोनॉमी, बेंजामिन स्मिथ ब्लूम जो 1956 में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टैक्सोनॉमी दी थी, 3 डोमेन की बात की थी. फर्स्ट इज cognitive domain. It is concerned with the first H, head. Second is concerned with the affective domain, affection. This is heart, second H. And the third is psychomotor domain, means cognitive domain, means the third H, and performance. तो उन्होंने कहा कि हमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट का भी डेवलपमेंट करना है, हमें अफेक्टिव डोमेन का भी करना है, और हमें परफॉर्मेंस बेस्ड भी करना है, जिसे कहते हैं PBAS, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट सिस्टम. तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, 3 डोमेन पे हमें काम करना है. तो इन द क्लासरूम व्हेन वी आर टीचिंग, वी आर हैविंग डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट. एक साइकोलॉजिस्ट हुए स्टैनले होल. स्टैनले होल क्या कहते थे कि एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस. तूफान और तनाव की अवस्था है. स्टूडेंट्स आर हैविंग एनर्जी, तूफान है उनके अंदर, एडोलसेंस के अंदर तूफान है, बट एट द सेम टाइम दे आर हैविंग द टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेस, सेंसिटिव भी हैं. एज ए टीचर, you should be very much sensitive in the classroom for all students. And in the teaching profession, in the classroom, we have to give individualized attention in the classroom to each and every student, and we should get the individual attention of the student. हर एक बच्चे पे हमारा अटेंशन होना चाहिए और हर एक बच्चे का अटेंशन लेना है. दिस इज टीचिंग. तो हम किसके लिए ऑब्लिगेटरी हैं? ऑल 50-60 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासरूम. तो हमें उनकी तूफान को भी देखना है, उनकी सेंसिटिविटी को भी देखना है. एंड एज ए टीचर वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वी कैन नॉट बी बायस्ड इन द क्लासरूम on the basis of their personal characteristics, because everyone is different, everyone is unique, they are diverse learners. We should not be biased. We should facilitate each and every student irrespective of their gender, irrespective of their caste, irrespective of their religion, irrespective of their language, irrespective of their locality, irrespective of their family background, और irrespective of their past academic achievements. पिछली क्लास में किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हो क्लास में. पिछली क्लास में किसी बच्चे के कम मार्क्स हैं, उसको आप दूसरे तरीके से ट्रीट करते हो. दिस इज नॉट फेयर. तो आपकी क्लास में तो बहुत डाइवर्स लर्नर्स हैं,
और हम दिस इज आवर अकाउंटेबिलिटी कि हमें सभी बच्चों पे प्रयास करना है उनके लर्निंग को एनहांस करने के लिए। तो लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग? टीचिंग की तो हमने बात कर ली, व्हाट इज लर्निंग? कहाँ है शिवानी मैम? तो टीचिंग और लर्निंग के लिए तो वही एंगेज है सबसे ज्यादा, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। टीचिंग एंड लर्निंग, यस मैम प्लीज, हाँ जी। व्हाट इज लर्निंग? मतलब लर्निंग, anything that complete you're able to see a change in your way, right? एक मॉडिफिकेशन है बिहेवियर में, पर्सनालिटी में, आपने कुछ सीखा जिससे एक चेंज आप परसेप्टेबल देख पा रहे हैं, मतलब बहुत सिंपली पुट किया जाए तो। Learning means, I am agree with Shivani ma'am. Learning means change in behavior. Not only change in behavior. Smoking करना भी behavior change, वो भी learning करता है बच्चा। यहाँ मैं add on करूंगा कि desired change in behavior. What is desirable actually, not undesirable. In teaching context in the classroom, learning means desired behavior modification. What we desire, what we expect from the student. So there should be the change in our students' behavior. This is learning. जो थॉर्नडाइक एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिए। पहला लॉ क्या दिया उन्होंने? लॉ ऑफ रेडीनेस। फिर कहा उन्होंने लॉ ऑफ एक्सरसाइज, फिर कहा उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो लॉ ऑफ रेडीनेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी आर गोइंग इनटू द क्लासरूम फॉर 60 मिनट्स, वी कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट अवर टीचिंग। We have to make our students ready to learn. शुरू के 5-7 मिनट उनको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तैयार करना। And we have to, either we can tell a story or we can ask something from the students, because whatever we are going to teach, it depends upon the content what we are going to teach today. उसके लिए हम क्या करेंगे? आज मान लो आप 5 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देयर इज ए प्री रिक्विजिट फॉर एवरी कंटेंट। हर कंटेंट का प्री रिक्विजिट होता है। 5 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन अगर आज साक्षी मैडम पढ़ाने चाहती है बच्चों को, तो आप ये प्री रिक्विजिट जानना चाहती हैं, ये एज्यूम करके क्लास में जाती हैं कि बच्चे को 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आती होगी, 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आती होगी, है ना? वी एज्यूम दिस, that's why we are going to teach 5 digit multiplication. So this is called prerequisite of today's topic. So in first 5 to 7 minutes, we have to make them ready to learn by asking questions regarding the prerequisite of today's topic. And this is called PK testing, previous knowledge testing. और जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम टेक्सोनॉमी आपने दिए कॉग्निटिव डोमेन में, कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड क्रिएटिंग। रिमेम्बरिंग मीन्स वी हैव टू रिकॉल देयर प्रीवियस नॉलेज, एंड दिस इज कॉल्ड एंटरिंग बिहेवियर। दिस इज एंटरिंग बिहेवियर, एंड नाउ we will say students will be able to recall their previous knowledge, and now we are teaching the new things so students can relate their previous knowledge to new knowledge. आज बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ेंगे, क्योंकि अब हम आज को 5 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड असेसमेंट। इसलिए मैं कहता हूं असेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। असेसमेंट पढ़ाने से पहले शुरू हो जाता है, एंड दिस इज assessment for learning. This is formative assessment. We have to study the present status of the students, and then we will study the terminal behavior of the students. तो entering behavior को भी assess करना है, उनकी present status को भी देखना है, तो आप उनको ready भी कर लेते हैं। और जो learning है, शिवानी मैम जानती हैं, this is the bond between the S and R. Stimulus and response. If you want to make your teaching more and more effective, S and R bond should be strengthened.
तो स्टिमुलस कौन लेके आता है? टीचर, क्योंकि हमारी ऑटोनॉमी होती है, वी आर द लीडर, वी विल प्लान एवरीथिंग, स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड। तो क्या स्टिमुलस लेके हम जाते हैं, वो हम प्लान करते हैं, क्योंकि हमारी ऑटोनॉमी है, वी आर मोर ऑटोनॉमस, हमारी ऑटोनॉमी ज्यादा होती है, बच्चों की कम होती है। जो भी हम प्लान करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड प्लान करते हैं, पर प्लानिंग हमारी होती है। तो स्टिमुलस हम लेके जाएंगे, बच्चा रेस्पॉन्ड करेगा डेफिनेटली। तो टू मेक योर टीचिंग मोर एंड मोर इफेक्टिव, अवर स्टिमुलस शुड बी स्ट्रॉन्ग, अवर स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड शुड बी स्ट्रेंथन। तो आपकी जो प्लानिंग है उसमें आपको ये प्लान करना है कि मैं कल जब 10 मिनट शुरू में बच्चों को इंट्रोड्यूस करूंगी अपना टॉपिक, उस दौरान मैं अपने टॉपिक के प्री रिक्विजिट के बारे में बच्चों से बात करूं, जिससे कि मैं असेस कर पाऊं कि उनका स्टेटस क्या है। अगर वो 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन का जवाब नहीं दे पा रहे तो 5 पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। 5 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने का फायदा तब है जब वो 3-4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन जानते हो। तो जो हमने एज्यूम कर रखा है कि वो 4 डिजिट की तो जानते होंगे, एक बार चेक तो कर लो। तो व्हाट द न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू टीच टुडे, अगर यहाँ पे फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स के रिसर्चर्स हैं, तो ओम्स रूल आप पढ़ाना चाहते हैं, ओम का नियम। तो व्हेन यू आर गोइंग टू टीच ओम्स रूल, फर्स्ट यू विल आस्क फ्रॉम योर स्टूडेंट्स इन जनरल वे सम एग्जांपल्स ऑफ देयर डेली लाइफ, उनकी डेली लाइफ से रिलेट पूछ सकते हैं। आप बिजली के बारे में उनसे पूछेंगे, आप उनसे इलेक्ट्रिक करंट को पूछेंगे, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, हाउ यू डिनोट द इलेक्ट्रिक करंट इन फिजिक्स। तो इलेक्ट्रिक करंट को वो डिफाइन करेंगे, बताएंगे एक लाइन में, फिर उसको कहेंगे आई से डिनोट करते हैं। फिर देन यू विल आस्क द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देन यू विल आस्क व्हाट डू यू नो अबाउट द वोल्टेज, हाउ यू डिनोट द वोल्टेज, देन यू विल कम टू द ओम रूल्स। अगर बच्चे को इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं पता तो ओम रूल क्यों क्यों पढ़ा रहे हो उसको? तो दिस इज टू मेक देम रेडी टू लर्न। तो आज का टॉपिक पढ़ाने के लिए उनको लर्न करना है, उनको रेडी करना है। और क्लास में जो स्मार्ट बच्चे बैठे हैं, हाई आईक्यू वाले 140 प्रतिभाशाली, उनसे पूछोगे तो बता देंगे। हमें तो बैक बेंचर से भी पूछना है, हमें लेफ्ट साइड वाले से भी पूछना है, राइट साइड वाले से। क्लास जानती कि नहीं जानती। अब साक्षी मैडम, शिवानी मैम जैसे हाई आईक्यू वाले बच्चे आगे बैठ जाते हैं फ्रंट लाइन में, तो वो तो बता देंगे, लेकिन हमें तो पूरी क्लास को भी पढ़ाना है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है टीचर की, कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं आजकल का सिस्टम हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज में, दिस इज वेरी चैलेंजिंग, बहुत टफ है। क्योंकि मैं यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट राजस्थान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले 10 साल से, नाउ आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और मैं आईटेप के बच्चे भी हैं हमारे यहाँ, एमएससी बीएड के बच्चे भी हैं हमारे यहाँ। अगर आप उनको कुछ कहोगे तो वो आपको एकदम से मान लें, जरूरी नहीं है। टीचर की बात एकदम से बच्चा आजकल मान ले, ये जरूरी नहीं है। स्ट्रेटेजी होती है कि आप उनको रोटेट कीजिए क्लासरूम, और ये भी बहुत चैलेंजिंग है। फ्रंट लाइन स्टूडेंट्स की पोजीशन को रोटेट कीजिए, बैक बेंचर्स की पोजीशन को रोटेट कीजिए। दिस इज कॉल्ड क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। You don't allow students to make their reservation at back benches. You don't allow to make their reservation at front lines. Let them rotate. उनको कहिए रोटेट कीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन बच्चे रोज आके सबसे पीछे बैठ जाते हैं। रोटेट कीजिए उनको, बिकॉज यू हैव टू इन्वॉल्व देम, यू नीड देयर पार्टिसिपेशन। अदरवाइज क्या होगा, एक बच्चे के पीछे फेस छिपा के बैठ जाता है कोई बच्चा पीछे की लाइन में। और मैं देखता हूँ ऐसे बच्चों को अपनी क्लास में। मैं 120 बच्चों की क्लास भी पढ़ाता हूँ, 100 बच्चों की पढ़ाता हूँ, 60 की पढ़ाता हूँ, थिएटर रूम में पढ़ाता हूँ। तो क्या करते हैं बच्चे, बच्चे के पीछे साइड से छिपे बैठ रहेंगे। उनको लगता है कि टीचर का आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरे से तो कुछ पूछेगा नहीं, मैं तो छिप गया। धीरे धीरे उसके अंदर टेंडेंसी बन जाती है, हैबिट फॉर्मेशन बन जाता है, और वो एकेडमिकली डिसएंगेज हो जाता है। इसे हम कहते हैं एकेडमिक डिसएंगेजमेंट। तो हमें तो डिसएंगेज नहीं करना, हमें उसको एक्सक्लूड नहीं करना है, इसलिए हमें उसकी रोटेशन करनी पड़ेगी पोजीशन, हमें उसको रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप ऑब्लिगेटरी है ऑल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अगर क्लास में है, तो हमें उसकी पोजीशन को रोटेट करना। वो एक सिगमंड फ्रायड हुए हैं। सिगमंड फ्रायड वाज द साइकोलॉजिस्ट
और उन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की उन्होंने थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि माइंड एक तो अनकॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है, और कॉन्शियस तो सिर्फ 1/10 भाग होता है, 9/10 भाग माइंड अनकॉन्शियस होता है। और ये अनकॉन्शियस माइंड को उन्होंने कहा इड, आईडी, इड। इड मीन्स प्लेजर गेटिंग एक्टिविटीज। तो हमारे जो एडोलसेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर हैविंग स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, तूफान है उनके अंदर, एनर्जी है उनके अंदर, और इड बिहेवियर करते हैं, प्लेजर गेटिंग एक्टिविटीज करते हैं, है ना। दे डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शंस। वो जो एक्शन कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेज उनको नहीं पता, बिकॉज दिस इज अनकॉन्शियस बिहेवियर। तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं, एक टर्म कहते हैं वो ईगो। ईगो को वो कहते हैं इट इज कंसर्न विद द रियलिटी, इट टेल्स अबाउट द रियलिटी, इट टेल्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। तब उन्होंने कहा कि द रिलेशनशिप बिटवीन इड एंड ईगो इज पैरेलल टू द रिलेशनशिप बिटवीन हॉर्स एंड हॉर्स राइडर। वो इड को कहते हैं हॉर्स, क्योंकि हॉर्स जो एक्टिविटी करता है, एक्शंस करता है बिना लगाम के, वो प्लेजर गेटिंग एक्टिविटीज करता है, उसके अंदर एनर्जी होती है। लेकिन हॉर्स राइडर उसको डायरेक्शन देता है, हॉर्स राइडर उसको बताता है कि किधर चलना है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। तो ईगो के पैरेलल उन्होंने हॉर्स राइडर को बताया, और इड के पैरेलल उन्होंने हॉर्स को बताया। तो इन द सेम वे इन योर क्लासरूम द स्टूडेंट्स विल ट्राई टू एक्ट in unconscious way. They will try for pleasure getting activities, जिसे हम कहते हैं delinquency, अपराधी बालक। वो पीछे बैठ जाते हैं, वो खुद भी डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, खुद पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। दिस इज delinquency, दिस इज exceptional children. तो in your classroom you are having diverse learners. आपने CIA-1 टेस्ट लिया, CIA-1 टेस्ट में कुछ बच्चों के आए 15, 16, 17, 18 मार्क्स 20 में से, कुछ के आए 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुछ बच्चे लो अचीवर्स हुए, कुछ बच्चे हाई अचीवर्स। तो CIA-1 क्यों लिया हमने? क्योंकि दिस इज अगेन असेसमेंट फॉर लर्निंग। वी वांट टू एनहांस द लर्निंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो व्हाटएवर वी आर टीचिंग, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ देयर progress of their learning. This is called assessment. To collect the data, analyze the data, to study the progress of the learning of our students, their achievements also, as well as their deficiencies and difficulties. Learning difficulties भी देखनी, उनकी learning difficulties को भी देखना, स्टडी करना है। तो ये असेसमेंट है, तो ये थ्रू आउट चलता है, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू होने से पहले शुरू हो जाता है, टीचिंग करने से पहले शुरू हो जाता है, और एंड सेमेस्टर तक चलता है। तो एंड सेमेस्टर में जो एग्जाम होता है उसे कहते हैं हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब जो सीख लिया उसका असेसमेंट, कि टू विच एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। अपने कोर्स आउटकम बनाए थे अपने कि 60 दिन में एक कंटेंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये 4-5 कोर्स आउटकम अचीव हो जाने चाहिए। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, दिस इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट, दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि whatever we have taught them, to which extent they have achieved the objectives. This is evaluation. Evaluation means it is the process of determining the extent to which the objectives have been achieved. This is called evaluation. But when you are asking question during your teaching and learning process, this is assessment for learning. This is formative assessment. That was summative assessment. एंड सेमेस्टर एग्जाम में जब साक्षी मैडम पेपर बनाएंगी, तो जो आपके 4th सेमेस्टर के बच्चे थे वो एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, कोई C ग्रेड, कोई B ग्रेड, कोई A ग्रेड, कोई A+, कोई O लेवल लेके 5th सेमेस्टर में चला जाएगा। अगेन दे विल नॉट कम फॉर द सेम कंटेंट। लेकिन जब आप पढ़ाते हैं, CIA-1 लेते हैं, CIA-2 लेते हैं, आज क्वेश्चन आस्क करते हैं क्लासरूम में, पढ़ाते समय क्वेश्चन पूछते हैं, दिस इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। You are asking to enhance their learning, to identify their learning difficulties, because all students are not same, they are diverse. तो आप जब क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको फीडबैक मिलता है। फीडबैक मीन्स नॉलेज ऑफ रिजल्ट। जब आपने कोई काम किया, आपने 10 मिनट पढ़ाया, 10 मिनट पढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे?
क्वेश्चन पूछेंगे क्लास से फीडबैक लेने के लिए, क्योंकि आपने जो काम किया उसका रिजल्ट आया एक, उस रिजल्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। दिस इज फीडबैक। और इफ यू आर asking the questions and you are having the feedback, you can improve your teaching methods, you can change in your strategy to improve the learning of your students. Otherwise एंड ऑफ सेमेस्टर के बाद तो आपको दोबारा मिलने वाले नहीं है, वो तो लास्ट में आपको इसे कहते हैं कि हाउ सेटिस्फैक्टरीली, हाउ गुड, हाउ बैड, हाउ अनसेटिस्फैक्टरीली दे हैव डन, दे हैव अचीव्ड, तो आप ग्रेड दे करके उनको आगे भेज देते हैं। फीडबैक का कोई मतलब ही नहीं बचता है तब तो। फीडबैक का तो मायने बचता है इफ यू आर इन योर टीचिंग, यू आर इन योर क्लासरूम एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद योर स्टूडेंट्स टू हैव ए continuous conversation with your students. For diverse learners, you should be sensitive. तो मैंने इनके लिए एक स्ट्रेटेजी आपको बताई कि आपको उनको पोजीशन को रोटेट कर लीजिए, एक ही जगह बैठाने का रिजर्वेशन मत करने दीजिए। एक ही जगह पे अगर बैठेंगे तो वो रिजर्वेशन हो जाएगा बच्चे का, हमें वो रिजर्वेशन तोड़ना है। फिर सिगमंड फ्रायड कहते हैं एक कंसेप्ट मोरालिटी, इट इज कॉल्ड सुपर ईगो। तो इड, ईगो, सुपर ईगो। तो सुपर ईगो इज कंसर्न विद द मोरालिटी, विद द एथिक्स, वैल्यू सिस्टम। वी हैव टू इनकलकेट वैल्यूज अमंग अवर स्टूडेंट्स, और इसके लिए दूसरा टीचर अपॉइंट नहीं होगा। अगर साक्षी मैडम इंग्लिश की टीचर हैं तो ड्यूरिंग टीचिंग इंग्लिश पेपर यू हैव टू इनकलकेट वैल्यू सिस्टम अमंग अवर स्टूडेंट। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में बेंजामिन स्मिथ ब्लूम ने कहा, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, अफेक्टिव एस्पेक्ट और साइकोमोटर एस्पेक्ट, ये सारे काम एक ही सब्जेक्ट के टीचर को करने होते हैं अपने अपने क्लास में। अब गांधी जी ने 1937 में कंसेप्ट दी थी, 1937 में वर्धा सम्मेलन में, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, उसमें उन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट किया। उस जमाने में एक तो रेवेन्यूज नहीं थे, फंड नहीं थे, सरकार पैसा नहीं देती थी, तो उन्होंने कहा चरखा चलवा लो, चरखा चला लो, बच्चों से, टीचर से, सबसे चरखा चलवा लो तो कुछ जनरेट हो जाएगा रेवेन्यू। बहुउद्देशीय वृक्ष लगवा लो, गार्डनिंग करवाओ, गार्डनिंग कराने से लकड़ी आएगी, फल आएंगे, फूल आएंगे, सब्जी आएगी। तो उन्होंने क्यों किया वो? उन्होंने किया कि बच्चों के अंदर फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन डेवलप करनी, ग्रुप में काम देना है, गार्डनिंग करानी है, तो फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, डिग्निटी ऑफ लेबर डेवलप करना है। क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा देने से, सब्जेक्ट की मास्टरी करा देने से काम चलने वाला नहीं है, ऑल राउंड डेवलपमेंट कराना है, सोशल स्किल डेवलप करनी है। तो सोशल स्किल डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, सरपंच के बच्चे को भी और छोटे मजदूर के बच्चे को भी एक ही साथ बैठा करके चरखा चलवाया। तो जिस सरपंच के बच्चे में फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी थी कि मैं तो बड़े बाप का बच्चा हूं, उसकी सुपीरियरिटी वाली फीलिंग कम हुई, और जिस छोटे क्लास के बच्चे में फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी थी, उसके अंदर वो इंफीरियोरिटी की फीलिंग खत्म हुई और एक फीलिंग डेवलप हुई, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना। तो आपकी क्लासरूम में भी ऐसे बच्चे होंगे, है ना? तो हमें सब बच्चों को इन्वॉल्व करना होता है। सिगमंड फ्रायड ने एक और बात कही कि दो तरह की पर्सनालिटी होती है आपकी क्लासरूम में। एक होता है इरोस पर्सनालिटी, एक होती है थैनेटोस पर्सनालिटी। इरोस पर्सनालिटी मींस दे आर हैविंग लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड दे वर्क इन कंस्ट्रक्टिव वे। उनके अंदर क्या होता है, लाइफ इंस्टिंक्ट होती है और वो कंस्ट्रक्टिव वे में काम करते हैं। एक बच्चा होता है थैनेटोस पर्सनालिटी का। थैनेटोस मींस हैविंग डेथ इंस्टिंक्ट, डिस्ट्रक्टिव माइंडेड बच्चा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों तरह के बच्चे टैकल करने हैं क्लास में, लाइफ इंस्टिंक्ट वाले भी, डेथ इंस्टिंक्ट वाले भी। लाइफ इंस्टिंक्ट वाले कंस्ट्रक्टिव वे में काम करेंगे, डिसिप्लिन होंगे, और जो डेथ इंस्टिंक्ट वाले थैनेटोस पर्सनालिटी के बच्चे हैं वो डिस्टर्बिंग होंगे, वो खुद भी काम सही से नहीं करेंगे और दूसरे को भी नहीं करने देंगे। दिस इज द डाइवर्सिटी। तो अब आप उनको एक्सक्लूड तो कर नहीं सकते कि मुझे क्या लेना देना। सम ऑफ द टीचर्स बिहेव लाइक दैट कि they are very much sincere to complete the syllabus in time, finish the course. They are not bothered about the students sitting in the bad benches.
दे आर वेरी मच पर्टिकुलर टू कंप्लीट द सिलेबस। वो एक पेन ड्राइव लेके आते हैं, पीपीटी लगाते हैं, पीपीटी को एक्सप्लेन करते हैं। दे आर नॉट बोदर्ड कि कौन समझ पा रहा है कौन नहीं समझ पा रहा है। They are having the postdoc from the USA universities and Germany, but they don't know the pedagogy. They don't know how to teach. What are the principles of teaching? They are very good masters in their content, their subject, but they are not having the basic teaching skills. They don't know the diversity of learners. इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो तो पीपीटी लगा करके जब नौकरी ज्वाइन करते हैं, उनका एक सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ाएगा हर साल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की पीपीटी बनाएगा, पेन ड्राइव, वो सारी जिंदगी काम आएगी। अपना स्मार्ट बोर्ड आजकल हमें मिल ही गए हैं, उसमें लगा देते हैं और उसको स्लाइड को बदलते रहते हैं, और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन बच्चों से नहीं करते। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा, टीचिंग इज द इंटरेक्शन। इफ यू आर हैविंग द इंटरेक्शन, you will be able to know the difficulties, learning difficulties of your students. You will be able to identify the diverse learners in your classroom. तो आपको थैनेटोस बच्चा भी दिखाई देगा, आपको इरोज बच्चा भी दिखाई देगा, आपको लो अचीवर बच्चा भी समझ में आ गया, जो आपने CIA 1 एग्जाम लिया जिसमें लेस देन 5 मार्क्स वाले भी बच्चे हैं क्लास में, वो भी बच्चे हैं जिनके 15 से ज्यादा नंबर आए। तो नाउ दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक सम रेमेडियल प्लान फॉर लो अचीवर स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं कहता हूं, टीचर का रोल खाली टीचिंग का नहीं है। टीचर इज ए लीडर, टीचर इज ए टीचर, एंड टीचर इज ए फैसिलिटेटर। वी हैव टू फैसिलिटेट, वी हैव टू गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम, बिकॉज वी आर फैसिलिटेटर। और एक रोल है हमारा डायग्नोस्टिशियन का। वी हैव टू डायग्नोज द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। और वो कब होगा? जब हम ऑब्लिगेटरी होंगे हर बच्चे के लिए। तो जब आपने CIA 1 एग्जाम लिया और जिन 5, 7, 8, 10 बच्चों के मार्क्स लेस देन 5 आए, आप उनको डायग्नोस करेंगे कि क्यों आए। इसको कहते हैं हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जब आपकी तबीयत खराब हो जाए, आज हम लोग 50-60 जुड़े हुए हैं, हो सकता है हमारे में से 5-7 लोगों की तबीयत थोड़ी डाउन है, तो हम सोचेंगे चलो डॉक्टर के पास होके आ जाते हैं। तो डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा, पहले डायग्नोस करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। वायरल है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देगा। तो डायग्नोस्टिक का मतलब है आपको डायग्नोस्टिशियन बनना है क्लास में। ये भी आपका ही काम है। आपने फर्स्ट CIA में एग्जाम में जो आइडेंटिफाई किए बच्चे, अब आप उनको ये देखेंगे कि उनकी लर्निंग डिफिकल्टी क्या है। अगर बच्चे ने 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन गलत कर दिया, आपने 0 मार्क्स दिए थे उसको CIA 1 में। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि ही इज एब्सोल्यूट 0 इन मल्टीप्लिकेशन, वो गुणा करना जानता ही नहीं है। यू कैन नॉट से ही इज हैविंग 0 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ यू विल गिव द डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऐसे बच्चों को आप डायग्नोस्टिक नेचर का टेस्ट देंगे। जैसे डॉक्टर हमारा टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट करता है और 10 टेस्ट करता है, आप उसमें 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन भी देंगे, 2 डिजिट के भी देंगे, 3 डिजिट की भी देंगे, 4 डिजिट की भी देंगे। अब आप देखेंगे कि बच्चा कहाँ अटक गया। जहां अटक गया वो उसकी लर्निंग डिफिकल्टी थी, और उसको आइडेंटिफाई करके आप रेमेडियल प्लान बनाएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, उन बच्चों को अलग से बुलाएंगे, अपने टीचिंग मेथड में चेंज करेंगे, उनकी उस लर्निंग डिफिकल्टीज को सॉल्व करेंगे। और ये सब कौन करेगा? साक्षी मैडम करेंगे। क्यों? शी इज वेरी मच सेंसिटिव टू बिकम ए गुड टीचर। शी वांट्स टू मेक हर टीचिंग मोर एंड मोर इफेक्टिव। अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट बोदर्ड, आई एम बोदर्ड टू कंप्लीट माई सिलेबस इन 60 क्लासेस। तो ये डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। लर्नर डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। वी हैव टू एक्सेप्ट कि मेरी क्लास के सारे बच्चे यूनिक हैं। दिस वी हैव टू एक्सेप्ट एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट कि हमें उनको ये फील कराना है कि आई एम फॉर देम, कि टीचर मेरे वेलफेयर के लिए, मेरी लर्निंग के लिए, वॉट एवर ही इज डूइंग इट इज फॉर मी। इसलिए डायग्नोस्टिशियन भी हो गया, फैसिलिटेटर भी हो गया, टीचर भी हो गया, लीडर भी हो गया, और एक और बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है टीचर को, उसे कहते हैं काउंसलर। क्योंकि 2 स्कीमा होते हैं, एक तो होता है मेंटल स्कीमा कॉग्निटिव, एक होता है बिहेवियरल स्कीमा नॉन कॉग्निटिव।
तो बहुत सारी नॉन कोग्निटिव एस्पेक्ट्स होती है। नॉन कोग्निटिव एस्पेक्ट्स जो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने अफेक्टिव डोमेन की बात की, इमोशन से रिलेटेड, सोशल स्किल से रिलेटेड, लाइफ स्किल से रिलेटेड, वो भी हमें देखना है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर आप बच्चों में ट्रस्ट डेवलप कर लोगे तो बच्चे आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, शेयर करेंगे, और आप उनकी काउंसलिंग करेंगे। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात है, इसके लिए कोई बाहर से टीचर नहीं तैयार किया जाता। जिस सब्जेक्ट का टीचर जिस क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, तो उन बच्चों को गाइडेंस वो अपने अकॉर्डिंग करता है। एक तो होती है ग्रुप गाइडेंस, जो आप 40-50 बच्चों को एक साथ दे सकते हो। वो किसके कंसर्न दे सकते हो? एजुकेशनल गाइडेंस दे सकते हो, वोकेशनल गाइडेंस दे सकते हो, है ना। अब मान लो किसी बच्चे में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, ट्रायंगल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रायंगल वाली, तो वी कैन नॉट गाइड हिम कि यू हैव टू ट्राई टू फिट इन द सर्कल। सर्कल में ट्रायंगल चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो हमें क्या गाइड करना चाहिए बच्चे को कि यू आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्क्वायर, तो यू शुड ट्राई टू फिट इन द स्क्वायर। तो जिस तरह की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें फिट होने की कोशिश करो। दिस इज एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, एंड दिस यू कैन गिव इन द ग्रुप गाइडेंस कर सकते हो। पर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर इंडिविजुअल, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, और वो बच्चे ने आपको तब बताई जब बच्चे को लगा कि साक्षी मैडम मेरे लिए हेल्प करेगी। आपने ट्रस्ट डेवलप कर रखा है बच्चे को, तो ही विल शेयर हिज पर्सनल प्रॉब्लम, एंड देन यू विल प्ले द रोल ऑफ काउंसलर फॉर द बिहेवियर स्कीमा। और वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो यू शुड नेवर डिस्क्लोज इन द क्लासरूम। उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को कभी भी, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एथिकली आपको क्लास में डिस्कस नहीं करनी। इंडिविजुअल गाइडेंस का यूज करना है और उसकी काउंसलिंग करनी है। तो आपका एक रोल और हो गया है काउंसलर का। और ये सब क्यों ले लिया आपने इतने सारे रोल? क्योंकि आप अच्छा टीचर बनना चाहते हो, आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करना चाहते हो, आप बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप डाइवर्स लर्नर्स की कंसेप्ट को समझते हो, आप क्लास में वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बच्चों को समझते हो, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, आप उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, 360 डिग्री डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हो, तब आप ये सब करोगे। अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं युंग। युंग ने कहा कि एक पर्सनैलिटी होती है एक्सट्रोवर्ट और एक पर्सनैलिटी होती है इंट्रोवर्ट। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो तो बड़ी शाई नेचर के होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, शांत बैठे रहते हैं। उनकी समझ में आ जाए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक, है ना। समझ में आ जाए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक। वो शाई नेचर के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। अपनी बात ना टीचर को बताएंगे, अपनी बात ना अपने साथी को बताएंगे। वो कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी होते हैं। ना अपनी समस्या बताएंगे, ना अपनी कुछ अच्छी बात बताएंगे। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, जो बहुमुखी होता है, वो अपनी प्रॉब्लम सबको शेयर करता है, अपनी बात सबसे करता है। क्या करता है? खूब मिलजुल के रहता है, सोशल स्किल्स होती है उसके अंदर, और खूब बोलता है, टीचर से भी बोलता है, बच्चों से भी बात करता है। तो जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुमुखी बच्चा आपसे अपने क्वेश्चंस पूछेगा, अपने कंफ्यूजन पूछेगा कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे समझ में नहीं आया। पर जो अंतर्मुखी बच्चा है वो आपसे कभी नहीं पूछेगा, वो चुपचाप बैठ के अपनी क्लास पढ़ के बाहर चला जाएगा, धीरे धीरे आइसोलेट हो जाएगा, धीरे धीरे एकेडमिकली डिसएंगेज हो जाएगा, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। समझ रहे हैं आप? तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? एक ये स्ट्रेटेजी होती है डाइवर्स लर्नर्स के लिए। इफ स्टूडेंट आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, यू शुड आस्क। आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। बैक बेंचर्स जो पीछे फेस छिपाए बैठा है, उसको खड़ा कीजिए कि अभी मैंने 15 मिनट पढ़ाया, उनमें से एक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। वो आपको जवाब देगा या नहीं देगा, या तो नहीं देगा, या गलत देगा, या सही देगा। अगर नहीं देता है या गलत देता है तो आप फिर दूसरे बच्चों से पूछिए क्लास में, उनसे हैंड रेज कराइए
और उस बच्चे से फिर रिपीट कराइए, क्योंकि वो इसलिए नहीं पूछ पा रहा था क्वेश्चन आपसे। 15 मिनट आपने पढ़ाया, बहुत मेहनत से पढ़ाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया और आपने सोचा सारी क्लास समझ गई, लेकिन वो इंट्रोवर्ट था, वो एजिटेट कर रहा था। उसकी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बच्चा से भी नहीं पूछता, ना टीचर से पूछता, अपने कंफ्यूजन के लिए नहीं करता है। तो दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड करेक्टिव स्ट्रेटेजी, देन यू शुड करेक्ट हिम। उसके गलत आंसर को आप सही कीजिए। और ऐसी बात नहीं है कि जिस बच्चे से, दो बच्चों से आपने क्वेश्चन पूछे, वही इंट्रोवर्ट थे और वही नहीं बता पा रहे थे, वही नहीं जान रहे थे। ऐसे और भी 10-15 बच्चे क्लास में हो सकते हैं जो इंट्रोवर्ट नेचर के थे, उनको भी समझ में नहीं आया था, लेकिन वो पूछ नहीं रहे थे। तो अगर आपने 2-4 बच्चों से खड़ा करके 15 मिनट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या होगा? आपने 10 का और भला कर दिया, क्योंकि उनको भी सेम कंफ्यूजन था, वो भी नहीं पूछ पा रहे थे। अब आपने उनसे पूछ लिया और करेक्ट कर दिया, तो 10 का और भला किया। इसे कहते हैं करेक्ट। 3 स्ट्रेटेजी होती है, 3। एक, और ये स्ट्रेटेजी वर्ड कहां से आया? युद्ध के मैदान से आया। युद्ध में हम क्या करते हैं कि सम सोल्जर्स विल गो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सम विल गो फ्रॉम द राइट साइड, देयर विल बी वन एयर स्ट्राइक। तो जो वो था ना महाभारत, उसमें अभिमन्यु के लिए जो चक्रव्यूह रचा गया था, तो इसको हिंदी में कहते हैं व्यूह रचनाएं। टीचिंग स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं शिक्षण व्यूह रचनाएं। तो हम इसमें स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है? 3 तरह की स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी चाहिए। एक तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी, एक सपोर्टिव स्ट्रेटेजी, और एक करेक्टिव स्ट्रेटेजी। जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है, दिस इज फॉर कि हमें अपने बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताना है, एथिकल बिहेवियर करने के लिए तैयार करना है, गलत चीजों से उनको प्रिवेंट करना है, उनको डिसिप्लिन रखना है, उनको बताना है कि नहीं, ऐसे एक्शन का ये कॉन्सिक्वेंसेस है, दिस इज नॉट गुड। उनको एथिकली भी समझाना है, उनके अंदर मोरालिटी भी डेवलप करनी है, वैल्यू सिस्टम भी डेवलप करना है, और इन चीजों से रोकना है। दिस इज प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी। दूसरी स्ट्रेटेजी है सपोर्टिव स्ट्रेटेजी। if you are having interaction with the students in your classroom, you are conducting CIA1, you are conducting unit test, then after having the responses of the students, you will be able to know their learning difficulties. Now, the second strategy, supportive strategy, will be required. You will have to support them, you will have to encourage them, you will have to motivate them, never discourage them, never pass the comment on their weakness or on their deficiencies. Some of the teachers pass the comment, अपने पिताजी से कहते, कोई दुकान उकान कर ले, तेरे बस की पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, तेरे पास पढ़ना लिखना, खेती वेती कर ले, इलाज विलाज कर ले, तो तू अपना कुछ और काम देख ले। We cannot do this. We have to encourage them, don't discourage them. Encourage them, motivate them to speak. उनको बोलने दो. Try to accept their feelings. Try to accept their ideas. This is supportive. और अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, जवाब दे रहा है आपका, तो उसको अप्रिशिएट भी कीजिए। वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छी, एक्सीलेंट। अगले दिन फिर आपको इंटरेक्शन करेगा, वो फिर इन्वॉल्व होगा, फिर अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा। अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया और बच्चे ने बता दिया, आपने कोई रिकॉग्नाइज उसको किया नहीं, बैठा दिया, दूसरे से पूछ लिया, फिर उसको बैठा दिया, तीसरे से पूछ लिया, वो कहेगा भाई नरेंद्र सर क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं और मैं अच्छे से जवाब भी देता हूँ, कोई रिकॉग्निशन तो मिलता नहीं। तो उसको हमें रीइंफोर्समेंट जिसे हम कहते हैं, दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ सपोर्टिव स्टडीज, कि हमें वी नीड द रिपीटेशन ऑफ सच गुड एक्टिविटीज। इफ वी नीड द रिपीटेशन, तो वी शुड अप्रिशिएट, ही विल डेफिनेटली रिपीट सच एक्टिविटीज। तो तीसरी स्ट्रेटेजी होती है करेक्टिव स्ट्रेटेजी, कि हम जब बच्चों से पूछते हैं, अगर बच्चा नहीं पूछता है तो हम पूछते हैं, तो क्या होता है, उसको करेक्ट कर दें। लेकिन करेक्ट कब कर पाएंगे? जब हम उनको मौका देंगे बोलने का, उनको डिस्करेज नहीं करेंगे, उनको थ्रेटनिंग नहीं करेंगे। सम ऑफ द टीचर्स ट्राई टू थ्रेटनिंग द स्टूडेंट, डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव टू फिनिश माय सिलेबस, आई डोंट हैव द मच टाइम, व्हाटएवर आई एम टीचिंग जस्ट नोट डाउन। इस तरह से बिहेवियर करते हैं। You have to be very sensitive and you have to give the opportunity after 10 or 15 minutes of
करेक्ट कर दीजिए, इसको कहते हैं करेक्टिव स्टडीज। तो आपकी डाइवर्सिटी का सब व्यवस्था आपके दिमाग में ही, आप अपने दिमाग से चलेंगे तो आपको डाइवर्स लर्नर्स के बारे में क्लास में डेली डेली ड्यूरिंग योर टीचिंग एंड लर्निंग आपको सब इंफॉर्मेशन हो जाएगी। 5 दिन की क्लास में टीचर समझ जाता है किस बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह की है ना। अब मैं आपको बताता हूं, एक टर्म होती है एटीट्यूड, एक टर्म होती है एप्टीट्यूड। ये आपकी क्लास में किसी बच्चे का एटीट्यूड निगेटिव हो सकता है बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस, है ना। लेकिन टीचर अगर एथिकल बिहेवियर करेगा, डेली अच्छे से डेडिकेटेडली काम करेगा, तो आप बच्चों के अंदर के निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव बना सकते हैं। Sorry to interrupt you, sir, but some of us can't hear you. I think there is some voice lag. I am not audible. Sir, no, sir, this is very blurry voice. I can't hear you, and I think this is the opinion which is being Now the shared voice by. is fine, sir. Initially it was disturbing. Snigdha ma'am, I can hear him perfectly fine now. Okay. So attitude means it is our inner system, belief system, our fear, our feelings, and this may be changed. So this is concerned with the present. लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है, एटीट्यूड तो होता है अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड होता है अभिक्षमता। एप्टीट्यूड मीन्स दिस इज द प्रेजेंट एबिलिटी दैट प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर बिहेवियर। अब जब इंडियन आइडल वाले ऑडिशन लगाते हैं तो जिनको बच्चों को सिलेक्ट करके लेके जाते हैं, दे आर नॉट सिंगर, दे आर नॉट गुड सिंगर, बट दे हैव द एबिलिटी टू बिकम ए गुड सिंगर। तो उनके अंदर वो एप्टीट्यूड था, वो एबिलिटी थी जो उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर देती। जब यूनिवर्सिटीज बीएड के एंट्रेंस का टेस्ट लेते हैं तो उसमें 40-50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। दे आर नो टीचर। जब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बीएड करने के लिए बच्चे ने एडमिशन लिया था, वो उस समय टीचर नहीं था, बट ही इज हैविंग द एबिलिटी टू बिकम ए गुड टीचर बिकॉज दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। वो फ्यूचर में अच्छा टीचर बन जाएगा, ये एबिलिटी उसके अंदर है। दिस इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तो एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, एवरी स्टूडेंट्स आर हैविंग डिफरेंट एप्टीट्यूड, डिफरेंट एटीट्यूड। और तीसरा होता है अभिक्षमता, अभिवृत्ति और अभिरुचि, दिस इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी आपका अलग अलग होता है। इफ यू आर ए गुड टीचर यू कैन मेक डेवलप द इंटरेस्ट अमंग योर स्टूडेंट्स। क्यूरियोसिटी डेवलप करो उनके अंदर, स्टिमुलस लेके आओ। अरे भाई आज तो रोबिन सर ये चार्ट वार्ट लेके आए हैं, पता नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं, कोई रियल ऑब्जेक्ट लेके आए हैं, कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो मेक देम दैट योर टीचिंग लेसन मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो यू विल ट्राई टू डेवलप द इंटरेस्ट अमंग योर स्टूडेंट्स। तो ये क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट के बच्चे बैठे हैं, आपको डेवलप तो करना पड़ेगा, अदरवाइज हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है बच्चे की अगर आप अटेंशन नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को डिफरेंट टास्क भी देनी, सोशल स्किल भी डेवलप होती है। हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप फॉर्म करते हैं, ग्रुप टास्क देते हैं, उसमें हाई अचीवर बच्चा भी रखो, लो अचीवर बच्चा भी रखो, हाई आईक्यू वाला बच्चा भी रखो, लो आईक्यू वाला बच्चा भी रखो, शाई नेचर का इंट्रोवर्ट बच्चा भी रखो, सोशल स्किल वाला भी रखो, एक्सट्रोवर्ट बच्चा भी रखो, और जो गुड अचीवर स्टूडेंट है उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दो कि जो टास्क इस ग्रुप को दी गई है उसमें सबका इनपुट लेना है, आपको आगे से आगे नहीं भागना, हर बच्चे को मौका देना है, हर बच्चे का इनपुट लेके और उसको परफॉर्म कराना है। क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी में तीसरा डोमेन था परफॉर्मेंस बेस्ड, तो हमें परफॉर्म भी कराना है उस ग्रुप के हर मेंबर से टास्क को। और इससे दो काम हो जाते हैं, एक तो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट हो जाता है और दूसरा सोशल स्किल डेवलप हो जाती है, सहयोग की भावना डेवलप हो जाती है। इसलिए हम ग्रुप टास्क देते हैं। सोशल स्किल डेवलप करनी है, अफेक्टिव डोमेन पे भी जाना है, उनके इमोशंस को कंट्रोल करना है, मैच्योरिटी लानी है, डेवलप करना है। तो जो बच्चे इग्नोर करते हैं कि मुझे आज परफॉर्म नहीं करना है तो वो बंक मार देंगे। अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आप नेक्स्ट डे फिर पकड़ोगे कि कल तो आपने छुट्टी की थी, आप आज प्रोजेक्ट कीजिए। 2 दिन बंक मारेगा, तीसरे दिन मारेगा, एक दिन फेस छिपा के बैठेगा बैक बेंच पे, जब लगेगा भाई रोबिन सर तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई। तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा।
तो हम ऐसे बच्चों को एक्सक्लूड होने से बचाते हैं, उनको डिसएंगेज होने से बचाते हैं, और हम उनको इंक्लूड करते हैं। दिस इज इंक्लूसिविटी, कि हमें हर बच्चे को इंक्लूड करना है अपनी टीचिंग लर्निंग में, और उसकी हैबिट फॉर्मेशन नहीं बनने देनी एकेडमिक डिसएंगेज होने में। इसलिए हमने एक पेपर पेंसिल टेस्ट लिया, CIA-1। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ पेपर पेंसिल से काम चलने वाला नहीं है, हमें क्यूज भी करानी है, हमें सेमिनार भी देने हैं, हमें असाइनमेंट भी देने हैं, हमें ग्रुप टास्क भी देनी है, हमें डिस्कशन भी कराना है। हर तरह का असेसमेंट होना चाहिए, नॉट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, जिससे कि आपको बच्चों के बारे में समझने का मौका मिलेगा। एक होता है बहुत अच्छा असेसमेंट, उसे भी फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, उसे भी असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो असेसमेंट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। बच्चा टीचर के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव वे में अपना पोर्टफोलियो बनाता है कि व्हाट एवर ही हैज डन इन लास्ट वीक, मेरा मैथमेटिक्स का CI-1 में इतने नंबर आए, स्पोर्ट एक्टिविटीज में मैंने ये किया, डिबेट कंपटीशन में ये किया, एसे राइटिंग में ये किया, व्हाट एवर ही इज डूइंग, ही विल गिव द इंफॉर्मेशन टू द टीचर, टीचर विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द and he will make the portfolio as per the abilities, capabilities, his achievements. You can guide him properly at appropriate time. इसे, क्योंकि गाइडेंस बाद में देने का कोई फायदा नहीं है, डिलेड गाइडेंस का कोई मतलब नहीं होता है, अप्रोप्रिएट टाइम पे गाइडेंस दी जाती है। तो अगर पोर्टफोलियो बनाने की कंसेप्ट बन गई और बच्चा बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है, उसमें अपने अचीवमेंट्स बताता है, अपनी डिफिकल्टीज बताता है, अपने इंटरेस्ट बताता है, तो आप डाइवर्स लर्नर्स को समझ पाते हो। एक हुआ करते थे कंसेप्ट CRC, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड में क्या होता था, बच्चे की बचपन से लेकर के उसकी फैमिली बैकग्राउंड से लेकर के आज की सारी इंफॉर्मेशन होती, सब कागजों में रह गया। CRC कौन यूज करता है? यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो उनको क्या पता ये बच्चा पहले सेमेस्टर में कैसा था। When you will have the CRC, you can identify, you can study the individual students. किसी बच्चे ने क्लास में आपके साथ इनडिसिप्लिन किया तो आप कुछ नहीं कहेंगे, आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, आप उसको क्लास से बाहर नहीं कर सकते। आप स्टाफ रूम में जाएंगे, उसकी CRC लेंगे, दूसरे टीचर से डिस्कस करेंगे कि उसने पहले भी इस तरह का कुछ किया हुआ है क्या। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड कार्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कार्ड में उसकी कोई स्पेशल एक्टिविटी नोट की जाती है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट या बहुत बड़ा इंडिसिप्लिन एक्टिविटी। So these are the information. In the same way, you can prepare the portfolio of the students and you can guide them. जब कंपनीज आती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, if you are having the portfolio, you can give the exact appropriate student to the appropriate industry. तो दिस डाइवर्सिटी जो है ना, इसको आप अलग से कोई टूल्स टेक्निक्स नहीं है जो आपको बना के हाथ पे रख के देगा कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है। You have to identify the diversity in the classroom and you have to accept and respect these diversities, and you can plan your teaching learning as per the personal characteristics of the students, and you should be ethical, you should be obligatory, you should try to motivate, encourage them by using various strategies, supportive strategy, corrective strategy, preventive strategies, and you should follow the principles of teaching, principles of psychology. चाहे वो सिगमंड फ्रायड ने दिए, चाहे वो गाल्टन ने दिए, चाहे वो पीने ने दिए, चाहे वो स्टैनले होल ने कहा कि तूफान और तनाव की अवस्था है, चाहे वो आपके युंग साहब ने कहा कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इन सबको समझना पड़ेगा, इन सबको ध्यान में रख के अपनी टीचिंग लर्निंग करनी पड़ेगी, और टीचिंग शुड बी इंटरेक्टिव, और यू हैव टू इन्वॉल्व ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाय रोटेटिंग देयर पोजीशन इन द क्लासरूम, है ना। और सबको मौका देना पड़ेगा बोलने का। अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो हमें पूछना पड़ेगा। तो एक टेंडेंसी रखनी है, एनकरेज देम टू स्पीक, डोंट डिस्करेज देम टू स्पीक। तो जो टीचर डरा धमका के रखते हैं वो अच्छे टीचर नहीं बनना चाहते, वो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। वी शुड ट्राई अवर स्टूडेंट्स जैसे हम अपने घर के, अपने खुद के बच्चे के साथ ट्रीटमेंट देते हैं, इस तरह का ट्रीटमेंट अगर आप क्लासरूम में देंगे, क्योंकि वो टीनेजर्स हैं, वो बच्चे हैं, उनकी नेचर अलग है, दे आर नॉट मैच्योर्ड, दे आर नॉट इमोशनली मैच्योर्ड। वो हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी फीलिंग्स को समझना है, एक्सेप्ट करना है, उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, आइडियाज को एक्सेप्ट कीजिए। दिस इज नेचुरल कि उनका बिहेवियर इनडिसिप्लिन हो सकता है, पर वी हैव टू स्टडी देम, वी हैव टू गिव काउंसलिंग। तो इसलिए मैंने कहा हम काउंसलर भी हैं, हम डायग्नोस्टिशियन भी हैं, हम फैसिलिटेटर भी हैं, हम टीचर भी हैं, हम लीडर भी हैं। एवरीथिंग वी हैव टू प्लान, दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर अकाउंटेबिलिटी। और ये इसलिए मैं कहता हूं, चाहे ब्लूम ने 1956 में कहा,
कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर सारे डोमेन पे बात करनी है, तब ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। चाहे वो गांधी जी ने कहा, चाहे वो NEP 2020 कहती है होलिस्टिक डेवलपमेंट 360 डिग्री असेसमेंट, क्योंकि हमें सिर्फ वो साइंटिस्ट और डॉक्टर नहीं बनाना, हमें रेस्पॉन्सिबल सिटीजन डेवलप करने देश के लिए। 1964 में जब कोठारी आयोग बना, वो जो दलबीर सिंह कोठारी थे यूजीसी चेयरमैन, उन्होंने उनके चेयरमैनशिप में 1964 में भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना, नेशनल एजुकेशन कमीशन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने रिपोर्ट का टाइटल ही रखा एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। 66 में रिपोर्ट दी, 2 साल बाद। उन्होंने कहा कि डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में शेप होती है डेस्टिनी देश की। वो कब होगी, जब रोबिन सर, साक्षी मैम, नरेंद्र सर, दिव्या मैडम, शिवानी मैडम, आकांक्षा मैडम, हम सब ऑब्लिगेटरी होंगे। हम देश में अच्छे सिटीजन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रोग्रेस ऑफ द नेशन इज डिसाइडेड नॉट इन कोर्ट्स, नॉट इन फैक्ट्रीज, नॉट इन लेजिस्लेचर्स, it is decided in school, colleges and universities. We should be sensitive inside the classroom, outside the classroom, outside the boundaries of the institution. We should be obligated to the community, to the nation. और ये सब होगा जब अच्छे एथिकल बिहेवियर के साथ हम क्लासरूम में होंगे। हर बच्चे को उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसको पनिशमेंट ना देके उसको स्टडी करके उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे। तब हम कहेंगे कि हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है, लर्नर डाइवर्सिटी क्या होती है, और उसको इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे बना के रखना है, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड फील, जो मैंने पहले भी कहा था, कि आई एम वेलकम्ड इन द क्लासरूम ऑफ रोबिन सर, आई एम वेलकम्ड इन द क्लासरूम ऑफ साक्षी मैम। ये फीलिंग डेवलप कर दो तो बच्चे 10 साल बाद भी आपको याद रखेंगे कि मुझे रोबिन सर बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये फीलिंग डेवलप कर दोगे बच्चों में, तो यही एक सबसे अच्छे शिक्षक की पहचान है। इस समय क्लास है और कौन क्लास के अंदर है, कौन क्लास में नहीं, तो प्रिंसिपल आपको क्लासरूम में तो भेज सकता है। क्लासरूम के अंदर आपकी ऑटोनॉमी है, आपका अपना टीचिंग स्टाइल है। आप मेहनत से पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, पर सैलरी तो मिलेगी। प्रिंसिपल आपकी सैलरी नहीं रोक पाएंगे। तो प्रिंसिपल आपको क्लासरूम तक भेज सकते हैं, लेकिन अंदर का एथिकल बिहेवियर ये इनर सेल्फ होता है। ये आपका डिवोशन, डेडिकेशन, आपके वैल्यू सिस्टम, आपके एथिक्स पे डिपेंड करता है कि आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है ना। तो फ्रॉम माय साइड आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्स लर्नर्स। और अभी और क्योंकि सभी लोग अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, हैविंग वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस एंड रिसर्च एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो आपसे इंटरेक्शन करके अच्छा लगा। चौबे सर तो बहुत सीनियर हैं, हमारे तो मार्गदर्शक, हमारे मेंटर हैं, और जितना मैक्सिमम एस्पेक्ट में कवर कर सकता था इस समय में लिखिए। फिर भी आपको ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। और कोई सजेशन देना हो, सजेशन भी दे सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे तो लोग सब अच्छा अच्छा ही कहते हैं, गुड लेक्चर, इंफॉर्मेटिव लेक्चर। तो मेल आईडी पे आप कमियां बता सकते हैं, है ना। मेरी मेल आईडी, मैं मोबाइल से एक्चुअली ये सेशन ले रहा हूँ आज, तो मैं मेल आईडी कैसे शेयर करूं। मेरे से इस पे मोबाइल में मेरी जो एफिकेसी है ना, आईसीटी की एफिकेसी थोड़ी वीक है, आई विल शेयर सर, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, अगर लिख पाऊंगा तो आप मेरी कमियां बता सकते हैं। और जो लोग राजस्थान कभी आए तो वो जरूर आए। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, और ये जो मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, इसी तरह के प्रोग्राम्स मैं भी अपने सेंटर से चलाता हूँ। मैं भी डायरेक्टर हूँ मालवीय मिशन ट्रेनिंग सेंटर का, अपने सेंटर स्ट्यूब राजस्थान में। और एजुकेशन में शिवानी मैम से मुझे इंटरेक्शन होने का मौका मिला,
हमारे यहाँ भी आईटेप प्रोग्राम चलता है पिछले 3 साल से, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज और एमएससी बीएड चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में इंटीग्रेटेड, पीएचडी प्रोग्राम चलता है। तो आगे हम कोई ना कोई एमओयू या कुछ कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे। आप कभी आइए डिपार्टमेंट। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में अपनी यूनिवर्सिटी में वैसे भी एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी ऑफ एम्प्लॉइज है हमारे यहाँ। हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, उसका भी चेयरमैन मैं हूँ। तो हम लोग बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी एफटीपीज करते हैं ऑर्गेनाइज। आप लोगों को बुलाएंगे अगले प्रोग्राम में डेफिनेटली। इस बहाने आप जयपुर अजमेर घूमने का मौका आप लोगों को मिलेगा और एक अच्छा इंटरेक्शन भी होगा। तो आप लोग जरूर सजेशन दीजिए, आइदर ऑन मेल और एनी अदर मोड। तो फ्रॉम माय साइड आई have completed. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने कहा कि देश का भविष्य तो क्लासरूम में होता है, बिल्कुल ये सही तो बात है सर सर। डॉक्टर कोठारी कह के गए आपने फिर से 1966 कहा में। सर, हमें अब समझ में मैंने आ भी जाए कहा है सर। जी। वो हमने नहीं सुना था, लेकिन आज हमने जी आपको मुंह से सुना, बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि टीचर को तो लीडर भी होना चाहिए, फैसिलिटेटर भी होना चाहिए, फ्रेंड भी होना चाहिए, गार्जियन भी होना चाहिए। जी। अगर ये सारी चीजें हैं एक टीचर में, तभी वो इंक्लूसिव हो सकता है एक्चुअली और सर तभी देखो, स्टूडेंट की मेरा अपना डाइवर्सिटी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस क्या है कि जो जेंट्स टीचर होते हैं, ये जी जेंडर जेंडर डिफरेंशिएशन है। जेंट्स टीचर बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, आप और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा वो एक्सपीरियंस ऐसा ही वो है सर। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि लेडी टीचर्स जो होती हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। दे ट्राई टू एक्सेप्ट द फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दे ट्राई टू रिजोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ। ये सब मदरली क्योंकि फीलिंग आती है, मदरली हाँ, फीलिंग। ये एक नेचुरल भी है, परिवार में भी हम देखते हैं। तो बिल्कुल मैंने एक बार जब स्मृति ईरानी जी हमारी देश की शिक्षा मंत्री थी, तो मैंने उनको एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट लेटर भेजा भी था कि प्राइमरी लेवल पे आप 100% रिजर्वेशन कर दीजिए लेडीज का। ऑल स्कूल्स आइदर दीज आर गवर्नमेंट और प्राइवेट, इन प्राइमरी एजुकेशन ऑल टीचर शुड बी फीमेल टीचर्स। लेकिन अब उनको लिखा था मैंने कि आप तो एक महिला हैं, तो एक ये बहुत बड़ा स्टेप आप कर सकती हैं। देश की सभी प्राइमरी एजुकेशन में 100% रिजर्वेशन लेडीज टीचर्स का हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, एंड सर उससे प्राइमरी वुमेन एजुकेशन इज द एम्पावरमेंट भी मेन होगा, एजुकेशन। बच्चों में लड़कियों में पढ़ने की जागरूकता भी बढ़ेगी, बिल्कुल सर। उनको मोटिवेशन भी मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, तो इस टीचिंग प्रोफेशन में आएंगी। और बहुत वो, क्योंकि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कह के गए, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव टीचर इज मदर। यस फर्स्ट टीचर इज मदर एंड द मोस्ट इफेक्टिव टीचर इज मदर। बिल्कुल सर। तो लर्नर डाइवर्सिटी भी, उनकी समस्याएं भी हमसे ज्यादा साक्षी मैडम, सोनिया मैडम, ये लोग समझ सकते हैं। स्टूडेंट डाइवर्सिटी सर बहुत ज़्यादा होती है सर, एंड जो प्राइमरी एजुकेशन है सर, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा नहीं मानते, बड़े क्लास में पढ़ाना अच्छा मानते हैं सर। जी जी जबकि जी। कनाडा जैसे देश में प्राइमरी, सबसे ज्यादा सैलरी यस, प्राइमरी सबसे ज़्यादा एजुकेशन सैलरी में, सबसे प्राइमरी ज्यादा टीचर की सैलरी। होती है, और वहीं पे जी सर देश का विकास होता है सर। हमारे यहाँ प्राइमरी जी। टीचर तो अरे आपने एलकेजी को पढ़ाने को दे दिया, क्या होगा उससे। तो सर ये तो ये आपके जो विचार थे सर आज बहुत गहरे तक गए हैं सभी के यहाँ पर, एंड आई रियली थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर fraternity of Ambedkar University, and we are, like you told sir, we are definitely looking forward to meet you in future sir. थैंक यू सो मच And, सर। थैंक यू सो and now I request my colleague Sonia ji to please have a honor of welcoming Professor S.K. Sharma ji from Sri Mata Vaishno Devi okay, College, Katra University. Sonia ji, please. Sir, we are waiting. Once the next resource person will join, we will Okay, start, sir. okay, okay. I think it is not okay. Thank you so much, Naren sir. Thank you, sir. खाना खा लिया।
Very good afternoon, sir. Good afternoon. Namaskar. नमस्कार सर, कैसे हैं सर? I'm fine. Sir, welcome to the NEP session day 3 of from the MMTTC DAVV Indore, and we are just collaborate with the Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi. So, who will be introduced to sir? A very good afternoon, sir. I'm Okay, ma'am. Go ahead. Sonia, research scholar from Dr. B.R. Ambedkar University. It is our privilege to welcome Professor S.K. Sharma, a distinguished academician and administrator from Sri Mata Vaishno Devi University, Katra. He is currently serving as the director of Malviya Mission Teachers Training Center and Directorate of Quality Assurance, and is also the chief coordinator of the Entrepreneurship Development Cell at SMBDU. Thank you, sir. It's truly an honor to have you here today in this session. Thank you so much. Over to you, Professor S.K. Sharma, sir. All participants are requested to please switch on your camera, and please the session will be interactive with sir. So please your camera will be switch on the complete lecture time. So please participate. Thank you so much for solving half of my problem. If these cameras will be on, then definitely we will have better interaction in this session. So I'm seeing majority of you are still having camera off. That will not be serving the purpose. Right? So please switch on your camera. We will be having better co-learning. So session is on the very, very interesting topic of skill development. This is one of the major planks of NEP 2020, that is the area and arena of skill development. So without wasting any time, let us set the tone of the session. And to set the tone of the session, I'm having in front of you this statement, which will be helpful to you to understand what are we going to talk in the session. So it is said that if you are planning for a year, you should focus on food grains like plant rice. If your plan is for a decade, then focus on trees along with your food grain. But if your plan is for a century, then you have to focus on something else, that is imparting skill to your children, because long-term planning aspires to have it. Saying so, because it is a NEP sensitization and orientation program, it's my duty to look to this aspect, that what was the journey of this education policy that we are adhering now as NEP 2020, Rashtriya Shiksha Niti 2020. It is third education policy that is in front of us. Before that, two other education policy we have witnessed. The journey, roadmap, road path is in front of you on the screen. First education policy came in the year 1968, followed by the second education policy in 1986. Technically, we are all product of second education policy. Then this third education policy taken the shape from 2015 onwards. This is the scenario shown on the screen to you. Former Cabinet Secretary T.S.R. Subramanian was the consulting, under whose leadership this committee got formulated in 2015 July. The committee submitted its report in 2017 and suggested to frame a dedicated committee to
frame the guidelines for the next education policy. And that is why Kasturi Rangan, former ISRO chief, under his chairpersonship rather, I should use the word, this NEP 2020's draft document was structured in the form of a bulky document of 484 pages. And from here, the final document of 65 pages after the consultation, discussion, deliberation from various stakeholders was structured. So on 29 July 2020, we seen the light of the day for this NEP 2020 policy document, which is a very, slim document comparatively to the bulky document of 484 pages to 65 pages document. And if I describe what NEP 2020 envisions, is described here in the shape of that NEP 2020 envisions a massive transformation in education. And how? Through an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, substantially into an equitable and vibrant knowledge society. And how it will happen? It will happen by providing high quality education to all. And making India a global superpower in the field of knowledge creation and knowledge development. So with this idea in mind, and keeping that statement on skills that I have shared with you in the beginning, let us start the formal session about the topic skill development. To understand the skill development, first question is to be answered, what is skill? Skill is the practical ability or proficiency of an individual to perform a task or a job. And these skills can be acquired through training, practice, or experience, or the combination of all the three. So to acquire skills, you can have training, you can have practice, you can have experience, or intentionally and intelligently, if you want to perform learning, then NEP 2020 suggestion is that we should have combination of all the three. That is training, practice, and experience. Now, before I move further, I have a question for you. Question is, what do you prefer? Hypothetically, if you have to choose only one out of the three for skill development, training, practice, or experience, then what will you prefer? Anyone? If you have to choose hypothetically one of the three, training, practice, or experience, what will you choose out of the three? Anyone? Respected sir, I'll go with the training part first, because training will inculcate a sense of learning new thing which I am not aware before. So then only I can practice, or so I think training is the foundation upon which I can build upon. Absolutely, absolutely right. If you have to choose one, then training is required. And the reason behind it is that through training, skills acquiring time will be less. You will be having a formal process of learning the skill. Ladder is like this. First you get training, then you practice, and then you get experience. Now, my second question comes. How you will get the rest of the two, practice and experience? This is what the soul of NEP 2020 is, what I am asking to you. Yes, So anyone?
It's a sequence, sir. First training, then practice, then you get experience, sir. That's fine, sir. I respect your suggestion of sequence. I'm saying, how will you practice and how will you take experience? As a teacher, what should we do for students that it happens in real world? So practice, sir. Agree. How practice? How practice will Sir, be done? sir, may I? Please. Sir, by giving student employment pertaining to the training that we have provided, either some introductory, a short-term employment, so that the student can uh, perform what he has learned in the training part. Agree. For that, you have to go to the laboratory, or simulated environment, or sometimes tinkering lab or incubation center. Somewhere you have to go where you will be practicing on what you have been trained for. So third thing then come is experience. How will you get an experience as a student? Experience is going to be acquired by you in the form of apprenticeship, in the form of internship, in terms of experience sharing with from various, you say, industry experts, people from there interacting with you or making industrial visits is experience. So this is where a good combination of all the three give you a better return. Imbalance of any of the three will be either taking more time or formal process will be disturbed. So we need to understand this, what the NEP 2020's core document is saying. I will suggest you to have a intelligent reading of NEP 2020's draft document. That was a real document which is showing you what the purpose was of NEP 2020 was. Because then the final policy document is a very small document. And most of the things have been, you say, reduced to few words, because that sense, if you want to have, then refer the broad draft document. Now, next thing I want to add here, that skills are often specific to a particular domain or activity. This thing we have to remember. What's the meaning of it? Domain specific. For a particular domain, particular skill is there. If you want to have another skill, then another domain you have to touch upon. And this is important to understand that there are broadly we have two categories of skills: hard skills and soft skills. Hard skills are also considered as technical skills, right? Refer to the teachable skills are job-specific abilities that can be quantified or measured comfortably. Whereas soft skills refer to the individual's social ability, how they relate to and how they interact with other people, comes into this second category. This is important for us to understand that when I am talking about skill education, under the NEP 2020's dimension, I'm using three terms: skill, skill development, and then skill education. So now let us shift to the skill development term. So what is skill development? Skill development is a process through which you got the ability to do something more effectively. Either you are taking less time to complete that job, or you are taking less resources to complete that job, or you are adding more value to that job when you have skill in you. I would be requesting again, participant, please switch on keep your camera on. We will be having better interaction if your camera will be on. Again, we should understand that NEP 2020's focus, it is one of the major planks is skill development. Why? We all have certain experience as a teacher, as a student, and otherwise. And we have witnessed a number of times through various reports of agency within the country and sometimes global agencies also. They mentioned that
Indian students or students of South Asia are not employable. One is having degree in BTech computer science, but they are not familiar with the fundamentals of coding or something in the domain area of, you say, website development, another area. They are not having knowledge of the fundamental languages even. Web development is poor for them. So in the light of it, it becomes very, very interesting and you say important to look that how we will be handling this very damage. This become a part of deliberation to look to this you say aspect very carefully. And I just want to mention you another aspect very, very significantly for you people, that just see this. This is what NEP 2020 mandates: vocationalization of mainstream education, or mainstreaming the vocational education by integrating it with the fundamental curriculum that you are having for any degree program. We have all now implemented NEP in our institutes. Now we have all implemented. It may have taken somebody has applied it 4 years back, some 5 years back, some have applied 3 years back. But now every one of us has applied. Now that this social stigma that we were having, that you can't have vocational education course when you are looking for a specific degree program in certain area, that has been closed down. Watertight compartment have been broken. Now you can choose, even though you are a student of humanities, a fundamental course on mechanical workshop if you have interest, or you can have selection of interest for photography as a skill along with the subjects of BSc medical. This is the beautification of this you say process. And remember, there are a lot of people, those who are having criticism on it, because they are not exposed to that phenomena, what is coming up throughout the globe. You cannot remain in the watertight compartments or a closed loop within your country. Now we are a global village. We need to see how the education developments are coming. That's why a different education policies have been introduced over the period of time. And before we move further, I just want to show you one of the statements of our beloved Prime Minister, which he has given in the year 2022 on 17th of September in one of the Kaushal Dikshant Samaroh. He mentioned that to make the century of India, it is very important that the youth of India is equally proficient in education as well as skills. When it comes to skills, your mantra should be skilling, reskilling, and upskilling. Can somebody tell me what is the difference between these three terms? Skilling, reskilling, and upskilling. Anyone? Anyone? May I, sir? Yeah. Sonia ji, better it will if you respond before that you introduce yourself. That will be betterly serving the purpose to understand what's your background, from which institute you. Respected sir, I'm a research scholar from Dr. B.R. Ambedkar University from the School of Management. Okay. Yeah, please tell me. Sir, I don't know whether the difference I'm telling is correct or not, but I'm putting it forward. Skilling is basically acquiring some knowledge, set of knowledge. Reskilling is over the time, your acquired set of knowledge get obsolete with the passage of time. Then you require to reskill it. Then comes upskilling to level it up. For example, recently I have learned AI in AI deployment and the various aspect of it, and I had learned various things. This is refers to as upskilling. That's right. That's correct. Okay, now let's have a question. Another question to answer this first question.
This training program falls into what category? Skilling, reskilling, upskilling? Participants. I think, sir, it's a upscaling Okay. because we Why? have some kind of basic. Sir, my name is Sakshi, and Yeah. I'm a research scholar from AUD. Sir, it's upscaling because we have some kind of basic knowledge already, what we studied. So you are giving some more information. So this is the upgradation. For you, it when- can be categorized as skilling also for you because you are a scholar. For teacher, it falls definitely under the category of upskilling. For you, it may fall into the category of both. Yeah, depending upon So what knowledge yes, level from you are that perspective, it can be a skilling for the basic knowledge for us. Yes, of course, sir. for you, for research scholar, not for Sir, a faculty member. Yes. Faculty member is practicing already. Sir, They can't reskill. Okay. Okay, sir. Right. So, anybody else who can add some value to it? Reskilling, skilling, upskilling. Something that is given is correct by the two participants. Sir, since we talk about NEP orientation, so I believe it's about skilling. Because when we talk about new policy, that means that there are different aspects which have been added for the maybe for the first time. So for that we are being sensitized and we are being oriented. So I believe it should fall under the category of skilling. It should fall, but because if you would have been conducting this session in the year 2020, then it may have fallen in the category of skilling. But now because you are already exposed to variety of the things, so it is a matter of upskilling. It cannot, for a teacher, it cannot fall into the category. That's what I want to make you difference. Upskilling is, skilling is whenever, I told you one thing, skill is domain specific. I have skill of swimming. It is not at all associated with my skill of analytics. So skills are domain specific. I can have number of skills with me. Reskilling is a process when there are certain skills which you forget. So when you relearn them, it is reskilling. But if you are updating your knowledge in that domain area, there are some updates and you want to get update like for say analytics, fundamental tool can be say Microsoft Excel or Microsoft Worksheet. But in the other category, if I want to learn advanced software in the field like Python, R, or some other SAS or other software, then that is a phenomenon of upskilling in the area of analytics that we need to keep in mind. Now, see this one picture you may be seeing here. I have pasted one news here. Are you able to read this news? Is this news readable? But the print is very fine, sir. Okay. At this headline, you may be able to read. Okay, no issue. If you are not able to, are you on mobile? Yes, sir, it is readable. No issue. Shafia, it is a news about TCS. When TCS laid off in the year July 2025, their 12,000 employee, that is counting approximately 2% of their workforce. And they said that reason is, in the title you may be seeing it, amid skill gap and tech shift. But technological shifts are so rapid. Skill gaps are widening. They were employee of TCS. TCS example intentionally I have taken, because TCS is still considered as a semi-government organization, where once you have entered, you can very easily work there without any severe threat of job. But still, TCS is also, you say, laying off. Reason is
And they were not employees which were newly recruited there. They were there from some years. Average time of them were 4 years. Some were more than that also. Means what? Means those who are already employee, for them also there is trouble of technical shifts and technical gaps and skill gaps. What about the new students with whom we are exposing? We have to keep them updated. Otherwise, it will be troublesome. To sustain, we are living in a world where technological shifts are very rapid. And if you see this next slide where I am showing you triangle of skill, very interestingly, when you are skilled, you will be more competitive in your job. You will be more productive in your job. Your terms of employability will be more favorable to you when you are skilled. But at the same time, we need to understand that updation, timely upskilling is very critical. One of the studies which was made in the year 2023 mentioned that if we focus only on upskilling, we can have 6.1% increase in GDP by 2030 only because of upskilling. So upskilling is a so significant tool. It is normally said that you can't do today's job with yesterday's methods and be in business for tomorrow. It's not possible. For that, you need to be remaining competitive, productive, and most importantly, favorable terms of employment in favor of you. Now, before I move further, I have a question for you. Have you heard a term called demographic dividend? Have you heard this term? Demographic dividend. Yes, sir. No, what is it? Sir, a demographic dividend is when we get look, we have a young population as compared to the other nation of the world, as compared to the aging population of the Japan, say. So, our if we skill our youth, we can reap the benefit of the demographic dividend. That is what is said by our honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, that it is the need of the hour to reap the benefit of the huge demography youth we have and reap it as a dividend. Absolutely. This dividend is. Sir, Yes. sir, when we use the potential of the youth, that can be also the demographic dividend, like what Yes. they have. Absolutely. Yeah. This is dividend only when you are able to exploit that potential. If you are not able to exploit, then it is a demographic liability. And that's what I am emphasizing here. You know, it's a 1 year old data. Median age of the country now is 29 years in India. As you mentioned, Sonia was mentioning, Japan is a land of age-old people. You know what is the median age? 49 year plus. In Europe, it is approximately 46 years now, median age. In India, it is 29 years only. Our 62% of the population is in the working age, 15 to 59 years of age category. 62% population is in the working age right now. We are saying this as the window of opportunity. This is window of opportunities when we are able to impart sufficient skills to them so that they become employable, they become more competitive, they become more productive. Then only job market will be recruiting you, na? Otherwise, why somebody will recruit you?
So instead of looking it as a liability, if we are looking it as a window of opportunity, then it is our responsibility to train them, impart them sufficient skills. Otherwise, we are going to invite a major challenge. And we are going to be the highest in terms of youth population by 2030. We have 4 years. So if we start imparting sufficient skills to them from here onwards, we will be in better position to make them employable. So they will be contributing to the growth journey of the nation comfortably. Otherwise, it will be difficult for anyone to frame it. Just a minute. I'm sorry, it was urgent to take this. Now see this. I'm having a query here with you. You people are, I think, majority of you look very young. This demographic dividend is available to us for how many years? This window of opportunity is for how many years? Any idea for how many years we have this window of opportunity open? Anyone? My dear friends, if you will not be keeping your camera on, motivation level of the resource person also be going down. So please switch on your camera. Only few cameras I am able to see. Till when we have this window of opportunity available? See, one of the government of India's data assessment, they are saying it is up to 2040. How many years left? 14 years left. Another data is reflecting 2047. That's also government of India's data. So then we have 21 years. McKinsey said that it is up to 2050. So then we have 24 years. So at most 24, at least 14.
Means to say, in these years, we have to train our youth. We have to make our youth competent to perform, to become employable, to become productive, to become competitive in the job market of the globe. See this next slide, where we are saying we are going to be the largest working age population categories country by 2030. 62% we are right now, but we are going to gain by 2030. Window of opportunity is up to 2040 only, or 2047 only. But major challenge is gainful employment for this youth. That is why vocational education and other things are being focused very diligently. And before we go for anything else, we need to look toward the present. What is the present skilling ecosystem in the country? As a teacher, it is our responsibility to look to that. If we are serving the purpose of NEP 2020 through our classroom teaching and through our research practices, because one of the agenda of the NEP 2020 is sharpening the skills of research for the student. That's why what we have done. We have started 4-year undergraduate program in which 4th year can be a research degree option elective, where you have to complete a project of 12 credits. Are you familiar with that? So it becomes very, very critical for us to understand this aspect. And that is why this ecosystem is supposed to be understood by us. One good thing in the recent year happened, standardization. When NSDC, Non-National Skill Development Council, was established long back, when in 2009, there was problem that what should be given to whom. So certificates were being given, and there was training, sometime no training, sometime very weak training, sometime very theoretical training of skill. That all were happening. But lately, it got changed. Now we have NSQF, National Skill Qualification Framework, and more than 4,500 courses have been recognized. More than 145 new age courses have been introduced. Lot of efforts in the skill delivery has been made, and more than 6.5 crore candidates have been trained by various ministries, including Ministry of Skill Development, Education, Industry, or other ministry departments. It has been well recognized that industry connects, industry academic attraction will be very required for skill education at a higher level. That's why 37 skill councils have been established, which are providing apprenticeship and internship and other training to the students. It has been well accepted that there is need of a regulatory agency, and that's why NCVET, National Council for Vocational Education and Training, have been established to look the role of a regulator in this skill education or skill development process. And it has been accepted that there is possibility that when you will be inculcating skills in your students, there may not be sufficient job opportunity within the country. So exploration in other countries have been made. That's why more than 11 government to government MOUs have been signed. And Skill India International Centers have been established in various countries. And from these centers, job opportunities in different parts of the world, avoiding any kind of, agentship, have been initiated. So this is the part of the ecosystem. Then another thing has been done in terms of the demand assessment. So various skill committees have been established at different statistics. So more than 580 rather,
these, I say, committees are there at the district level. Another thing, skill gap studies. What is skill gap studies? Somebody can tell me. What's the meaning of skill gap studies? Somebody? What is the meaning of skill gap studies? Yeah. What is the meaning of skill gap studies? Anyone? Sir, may I? Yeah. Sir, I don't know I'm correct or not. Skill gap training might possible is that we study our population under consideration that the requisite skills that we require in our job market is our starter, is our population has that required skill or not. If not, then we will provide them. For example, what TCS do is they provide training, they conduct a small test for their experts, and after the test they provide them training for the particular section in which their experts are lacking. See, what you are saying is not wrong, but in the context of NEP 2020, skill gap studies means what is being trained, what are the skills you are giving at the education institutes, and what are the skills required in the job market. If they are not matching, then why you are generating those skills? That is the question. So skill gap is in that context we are talking here. Sir, can I also pitch in? Yeah, please. Sir, I'm Dr. Snigdha from Ambedkar University. Right. Could it be a research-based assessment just to see the kinds of skills that are being imparted at the various institutions? As in universities, colleges are at par with the industry demands, or Yes. whatever their professional platforms are demanding them to be. So perhaps in context of NEP, if I can correlate that NEP is also a measure in which they are also trying to understand the kinds of reforms that the government is supposed to bring in light of what to propose next from a certain state's perspective are in line with what the industry is demanding the students or the learners or the scholars to be in line. So perhaps as faculty members or as people from education sector, we could also contribute in sharing that bit or being a part of the entire process, which helps us reduce this particular gap through some of the ways. To some extent, you are right, my dear. Right. You are trained on various fronts. But as long as studies term is concerned, you are very right. Making studies to understand what skill in the market is required and what skill is being imparted in this education institute. Various levels we have witnessed that syllabi of the institutes are not upgrading as per the requirement of the industry. Still, there are courses where DBMS is being, you say, is a part of the syllabi. Is it required now? What is required in the market? If you are not imparting those skills, you are not serving the purpose. I'm giving an example. Few years back, BVOC program, Bachelor of Vocational Education program, I was supposed to evaluate somewhere. What I witnessed, there were 27 students, those who were doing BVOC program. I found that all the 27 students were given specialization in one field only, that is photography. So I asked that why you have not given other skills. They said that resources were not there. Then why you have started BVOC program? How 27 students will be absorbed in a state? There may be requirement of other skills, like plumbing skills required in that area, fitter skills required in that area, data analytics skills required in that area. Nowadays, AVGC is one area where a lot of skills are required, are augmented virtual reality area. So these aspects are supposed to be looked out very carefully by us. And that is why
Sorry to interrupt, sir. Can I, sir, ask a question? I mean, only if it is. Sure, why not? Sir, I was just thinking that are there any structured studies that are initiated at the university level or at UGC level, which perhaps we can read so that we can also think of while we are planning new programs at our university? I don't know whether they have been made public or not. I have evaluated some studies of ICSSR 1 year back, where the skill gap studies were analyzed excellently. Some other studies by some agencies from Haryana have also initiated it. They consulted me on the initial level in terms of framing their basic assessment test instruments. So they published it lately. Maybe available, maybe with the agency to in the evaluation structure. I think better it is to Google it. Some studies must be there which have been done earlier, right? Some are under evaluation. They may be released in next, you say, 1 quarter or so. There are studies available. Thank you so much, sir. Yeah, you can search through you say Google Scholar, because research publications are huge in this area. Okay. In the context of India, they are of better quality with better methodology. They have applied it. Oh, that's great. In that case, I think we can also encourage research scholars in our university, which are from different disciplines, to also conceive of certain projects that could Of work. course, this is a burning area of research nowadays. That's very useful to know, sir. Thank you very much for initiating this train of thought. Yeah. Another thing, in the ecosystem when we are looking, Government of India understood it from the very beginning that when we are looking towards skill development, skill education, funds will be required, finances will be required, because finance is the lifeblood of any scheme. That is why this ecosystem must be understood by you. National Skill Development Fund have been established, where mobilization of funds of CSR have been initiated, and lot of funds have been arranged already. Along with it, at the state level, lot of efforts have been made. Like for Karnataka's public-private partnership model, excellently performing. ITI and Polytechnic management through private industries in various states, including Assam, West Bengal, success stories. Skilling loans, facilitation from the bank and NBFCs is also an example of it. One another good thing happened in this area. High-end fee-based courses have been initiated in partnership with the industry in the different fields like Industry 5.0, Industry 4.0, cloud computing, full stack coding, AVGC I've already talked to you, renewable energy, blockchain management. These are the specialized training programs, certification programs for few months, maybe 3 to 6 months. And normally these trainings are happening in off hours, in the evenings or on the evening, Saturday or Sunday sometime, in a college of the district. And it is approachable place where anyone from any college can approach and attend this program. There is fee associated with this program. Intentionally they have started, because if you are not paying, you will be less serious. And if you are paying, your seriousness will be high. So that is to be looked out very carefully by us. Another thing that you should be knowing as a student of education, we are all students of education in the different subjects. There are various key players to promote skill development. These are the names already mentioned on the screen. Now, if we move further towards our report, I just want to make you familiar with this report. This is a report not by the Government of India's any agency. It's a report by a global agency, that is World Economic Forum. So this report published in the year 2023. That is showing Future of Jobs report 2023. Just read it. Just read this slide. I'm telling you, it's very interesting slide.
Thank you, sir. Surely, I'll take a note of this. I will be suggesting you to download this report. Just have a reading of it. You will realize that what is happening globally, how prepared we are. NEP 2020's agenda to offer skill-based courses, ability enhancement courses, value-added courses is not something that has been a castle prepared in the air. I'm not advocating any government effort, I'm telling you. I'm telling you the factual reality. Wherever it is required, we can criticize government effort also. But I'm telling you, this is one thing which is not an option for us. It's a mandatory thing that we have to follow. See the scenario here. It's the report of 2023. And prior to that, there were some other reports that is relatively a recent report. This report is showing that global skill landscape is undergoing significant transformation, driven by the rapid pace of technological change, demographic shifts, and evolving job requirements. It was predicted in 2023 that globally, not in India, but globally, 83 million jobs are projected to be lost. 83 million. But at the same time, 69 million jobs are projected to be created in the next 5 years. So technology adoption and broadening of the digital access will be the major trend in driving the business transformation. With big data, cloud computing, AI, machine learning, automation, Industry 5.0, things are changing rapidly. Various agencies, government agencies, non-government agencies throughout the globe in different countries are investing heavily in upskilling and reskilling. So by World Economic Forum, the internet report that I could find, it has been released in 2025 also. I've pasted I the agree. It is my reference for which I am emphasizing that is serving purpose to 2023. After that, 2025 report is now available. In that context, you can have a thorough reading of that and certain updates available. Why I'm showing you? Because I'm talking to you regarding the NEP 2020 when it got implemented. Why these things were so strongly emphasized at that time? Because that was alarmed at that time only. Now the layoff of Amazon, TCS, and various other think tanks are the pre-forecasted values that has been assessed in 2022 only. It is nothing new that is happening in 2026. That 30,000 employee TCS has laid off. Amazon has also done it recently from Hyderabad office of their corporate office, biggest office of the world. Keep this thing in mind. Not only India. They have also done it. Various agencies throughout the globe are investing heavily in upskilling and reskilling initiative. I have a question here. In this report, there is emphasis on two terms, upskilling and reskilling. But they are not talking about skilling. Why? Why skilling is not written here? Maybe it's focusing on the new age, change in the skills that are required for the job. So whatever was available from previous era is not applicable anymore. So maybe we need to change our attitude towards, Actually, most of the part of the globe, they have given the basic fundamental skills to their children already. For countries like us, that very purpose of skilling is also not achieved till now. That's why we use three terms: skilling, reskilling, and upskilling. Global reports are talking about reskilling and upskilling because majority of them have already been given skills at the different levels.
or else problem is multifolded. You know, in Europe, they have made a pact in 2022 that we will be giving upskilling and reskilling training to 60% of their adult population. Adult population means somebody who is 65-year-old is also supposed to go through that training in different level of skills. So you can understand how the scenario is. Now there is another dimension I am talking to you. There's a term called competence. You may have heard about it. And competency you may have heard about. Then the concept of competency development come into picture. I will be talking to you about that also. So broadly, when I'm saying competence, competence refers to the combination of knowledge, skills, and abilities that enables an individual to perform a specific task or a function in effective way. So it's a broader concept that encompasses both capability and application of that capability. So when you are getting experience, when you are gaining knowledge and inculcating skills, you improve your behavior and your performance, through which you hit the bullseye and hit the target. Here, one thing we need to understand, what are the major components of the competency development? Three are the major components of the competency development that are here in front of you. Three major components are knowledge, skills, and motive. Knowledge necessary for performing a task but not sufficient. Skill reflects a system and sequence of behavior. And motive is what McClellan termed it as achievement motivation. What if we want to convey here? With an example, we can understand it more comfortably. If you know how to play cricket, it is your knowledge. When you are actually playing cricket, it is your skill. But when you are continuously practicing to improve your game of cricket, it is achievement motivation. So when I am talking about the skill education, now term skill education I am using, skill development, and then now third, skill education. We need to have presence of all the three things in the skill education. Knowledge, that is what we call training. Skill, when you are actually practicing it. And motivation, then you are continuously making efforts to grow on it. I have a question here for you. Question is, out of the three, hypothetically, if you have to choose one for your class, what will you choose? Knowledge, skills, or motive? If you have to choose for your classroom, out of the three, what will you choose? Yes? Anyone there? For me, it's very difficult to choose because I might just choose all three. Absolutely. Technically, NEP 2020's mandate is choose all the three. But if you have to choose hypothetically only one, then what will you choose? Motive looks very seductive, but skills is equally important. Yeah, so if I go by the seduction of the word and the explanation you put there, of course, motive. I'll also go with Dr. Javed sir. I'll also choose motive first because there should be some motive for the student to learn a particular skill or to acquire certain set of knowledge. That is what the NEP 2020's aspiration is. That when you are looking for skill, don't see only skill development, but skill education. And when education means you are doing the third thing also along with the first two things. So that is the process
we have to develop competency among the students. Skill education is talking about competency of the students, right? We can move further. If there is any question, you can have. Yeah. Now I have a question for you. What is the difference between these two terms? Hello, sir. Yeah. Invention is inventing a new thing from the base, from the start. And innovation complements invention, that is, innovating the existing thing. Okay. What's your subject? Management, You're a faculty or a scholar? scholar. Okay. Somebody else who can add some what she has explained? I mean, if I go by the literal meaning of what these words represent, then I would say, like in school, we always learned the distinction between discovery and invention, right? So invention is always the launch, the initial creation of an idea, product, or a system. But then once that has been, so my understanding with innovation would be, it could be, maybe further work on the invention. So you keep on kind of exploring new ideas within that domain and keep on improving it. That would be my literal understanding. I don't know what. Okay. If I may. Buddy. Yeah. Yes, sir. So innovation, to my understanding, just adding what Javed has already said, I think innovation is looking at more of incremental advancement of technical know-how, so that you look forward to more improved ways of doing what you have always been doing. Invention could be where you bring in altogether new disruptions in the existing know-how or your ability to perform tasks. So it would be more disruptive in nature, where invention can then, for instance, just digital cameras and old photography through films. So as a result of which there is a creative destruction in the market as such. So innovation could be along those lines. So you will have, and I think if I relate it to the theme of what you had just now communicated, is that in a sense that transformative ways which are going to become regular part of the functioning of different human systems in future. It's more towards that, sir. Right. What's your subject, Robin? Sir, mine is economics. Where are you working? I am working as a faculty at Dr. B.R. Ambedkar University, sir. Okay. Nice explanation you have given. In the context of skill, this explanation required. I took an example to explain it more lucidly, what you have explained, because disruption and creative destruction are the words sometime other than management guy may not able to grasp thoroughly. Seat belt, who invented or innovated seat belt? You all are using it, no?
I think it was Volvo which invented this seat belt. Volvo has done. Very nice. Volvo has taken patent of it also, but then they opened the patent. Why? They said that it is a life-saving instrument design. We will not be charging anything for it. So actually, Volvo did what? Volvo has done something novel, but they have not commercially exploited it. So anything that you have not commercially exploited falls into the category of invention. Novel thing you have done, but you have not commercially exploited it. Any government of India or any other agencies, recommendation is now to innovate. They are not saying invent something. They said innovate something. So new thing, anything new you are developing, you should make a commercial exploitation of it. If you are not doing, then you are not serving the purpose. So innovation and invention, fundamental difference can be understood like this. Correct? Any other question regarding it somebody is having? When we are looking toward the skill, we also need to look to one another aspect. That is level of skills also deciding the level of workforce category of yours. You may have heard about two broader category of workforce, white collar and blue collar. Now we have four category of workforce from the skill development viewpoint. Gray collar and rust collar. You may have heard about these workforce categories. You know, it's very interesting to look. White collar job and blue collar job, we are familiar. But the third category of, you say? Yeah, very interesting. I'm hearing it for the first time. Yeah. This gray collar job category is most threatful category right now, along with the white collar job category. With the advent of technological upgradation, all threats lies with first two categories. Blue collar job is safest job in these days. They may be getting lesser returns. Their salaries may be less, packages may be less, but they are safe from this recent debacle that are happening. One new AI software and introduced, stock market slashed down. All the IT sector stocks face a new trouble. This scenario is significantly competitive. So we need to prepare a strategic planning for the whole economy. So that we should have combination of all four categories. And that intelligence required from the point of view of macro categories, macro standards also. Another thing for the skill education we have to understand as an academician is the stages of skill development. Broadly, there are 5 categories of skill development. It's a typical dry-fuse model I am introducing and talking to you. First stage is novice stage. Second stage is advanced beginner stage. Followed by the third stage, competent stage. And you may ask a question here that why this green color converted into the different color and then again green color is shown. Intentionally, we have third stage as competent stage in the different color. As a teacher, as a trainer, our responsibility that we should have a strong hand holding with the students till they reach to the stage number 3. Because once you have reached stage number 3 of any skill level, then you will be sufficiently capable to perform the task. Then proficient stage give you a holistic view. So you start making policy structure. And expert stage, you start improving the skill standards. But at least we have to keep hand holding with the students up to stage number 3 when it become competent. So this stage is critical stage for each one of us to understand carefully. Are we going in the right direction? Are we going in the right direction? We should move further.
नहीं बोल रहा है कोई भी। ये बताइए जरा, what would you Yes, sir. choose? What would you choose out of these? A or B? Sir, Hmm? A. Sir, A. Sir, A. Okay. Yes. Fine. Shifa. I think I'm pronouncing it correctly. Yes, sir. What do you say? A or B? So I think I would choose A, but I think if I have to think about developing skills and my competence, I also have to feel like I need to know more, as though I'm half empty. So I'm thinking that in this context of our discussion, maybe B, so that I may want to learn something No, new. see it from the point of view of a trainer, from a point of view of an academic teacher. Then what will you choose, A or B? I would teach A half full, that I may have some necessary skills, and that's enough to get me going. You are looking it, you are so selfish that you are looking it from your own angle. Yes, You are I not looking admit to from the that. angle of the I'm student. fully selfish, not even half selfish. No, actually, what I want to convey here, selection, if in the skill education we are looking, we should choose for B, because then you are looking toward the solution of the problem. So you are identifying the problem and then looking the solution of the problem. Orientation is supposed to be changed. That is what the skill education requires. NEP 2020's emphasis on competency development is that you should be providing solution-oriented skill practices to the individuals. Now, on the similar lines, I have a question. When you say is the glass, what is the glass here? glass is a glass, is a perception only. Is perception. Yeah, Perception it of is. what? My abilities. It's a perception of you, not in terms of abilities, channel perception. If you are looking it like this, for student, what will be the orientation of you to teach? Are you be orienting to be part of the solution or to be part of the problem only? Or you are not don't want to look towards the problem. You want to show a greeny, you say picture only. That is not serving the purpose. You have to be a little bit cruel in the class to identify what are the problem and how can you be solving that problem. So orientation of the skill is like this. What is the skill? Skill is solving certain problem in less period of time with less resources or with more value addition. That is skill. So from that point of view, you have to see the problem. Problem is that it is half empty. You have to fill it up. Anna? This is what the perception is. Dr. Vani wanna say something. Dr. Vani, I'm just enjoying the conversation. Thank you. First introduce yourself. I'm Javed. I also teach at Ambedkar University at the School of Legal and Socio-Political Studies. I'm a historian by training and I teach legal history. Right. So now let us see another very interesting dimension. See this picture here. This is a design sequence. When you have formal skill education, formal, systematic, then complexity, uncertainty, patterns can generate insights, and insights can generate concepts, and through concept you can innovate and prepare a design comfortably. This is the sequence of a systematic formal skill education. And if you are not doing it, then see the picture. Now you have two pictures here. First is like we have seen previously. Downward picture is the reality. Formal training is not been, given to the students. Then he will be having what? Hit and trial process. There are a lot of impediments, hurdles, constraints you will be facing. Probability of achieving the objective is poor. So formal skill education is
So critically required. Another thing I just want to show you, when we are looking towards skill, curiosity generation is the critical thing that you have to look out as a teacher, because curiosity is the wick in the candle of learning. So that you have to make student curious about skill. Skill education is slightly different than the other form of education. Another skill that is a life skill we categorize is resourcefulness. It explains that it is not the lack of resources that cause failure, but it is the lack of resourcefulness that creates problem. Whatever resources you have criticism for that. Now, normally you may be witnessing, or sometimes you may be saying to your parents, you have not provided me this, otherwise I could have done miracle. Isn't it? We all say like this. Skill education is saying one of the life skills that you have to learn. Whatever the resources are there, make optimum utilization of that. You will not face the failure. So skill education is slightly different. Then one another thing I want to share with you, the power law. You may have heard about this. What this power law is? See this. When you are in the real skill education, you are doing hands-on. Practically, you are doing something. When you are doing something practical, there are chances of value of disappointment. This value of disappointment means whenever you are doing something hands-on, there are chances for you to realize that whether you will be able to do it or not. That may be for 10 minutes, maybe for 10 days, maybe for 10 hours, maybe for 10 years, depending. But that value of disappointment is always there. Like first time when you have learned cycling, or first time when you have learned driving car, there may be thought in your mind for some time whether I will be able to do it or not. In student, normally it comes when they are learning skill of various types. For them, that you have to guide them as a teacher, that if you will be making continuous spontaneous efforts, you will be gaining much more than what you have expected. You will be gaining with orange color instead of green color. And another thing in the one that is one of the life skills, what we said, that right skills make you employable, but right attitude make you irreplaceable. So we have to explain the student about this life skill of attitude along with the learning the fundamental skills as such, what we call technical skills in the category. So this is all I was focusing to be deliberating with you. Over to you for your questions, comments, queries of different types. Any question, any query, any comment? Participants, if you have any question, you can ask. We have approximately, you say, 7-8 minutes for any query, question of in this regard of the session. Thank you for your efforts to make this an engaging session and an interactive one. Grateful. Thank you so much for delivering such a wonderful interactive session, sir. We are very grateful to have you here. Any suggestion or any question? These are comments or compliments, whatever you can say. Question or suggestions are welcome. So I was wondering, that do you feel that when we look at NEP as a policy document, we are trying to address the question of employability? And I'm wondering, is that where our concern is focused and whether it ends there? What about education that's outside the, focus of employability? No, fine. That's very fine. For that, there are a lot of courses in every program. There are courses, and even you have an option. You can choose certain courses which are not towards vocationalization, but for the deep literature and other dimension.
You can do that. But the point is, for a country like us, which are large in numbers, where population is an opportunity as well as a challenge, everyone will not be able to gain that what you are expecting. Majority of us would like to be employable after the education. That is what the trouble we were having in the previous system. Our students were getting degree in computer science, and he was not able to know how to prepare basic coding. When they were getting interviewed, they said that I scored 9 CGPA in BTech program from a premier institute, but basic skills are missing. So in that context, it's very important that you have to make them employable also. Or if not employable, start your own venture. Entrepreneurial, I say, skills you can develop that are all there. Any other query, question, some suggestion? Yeah. If there is nothing, then permit me to leave. Anybody from the organizing team? Yes, sir. Please. Participants, if you have any doubt, any query, I think there is no more question, sir. So anybody who vote of thanks to produce? Yes, ma'am will do. Yeah. Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir, for giving us diverse perspective on various subject like skill, upskilling, and reskilling. Moreover, a different way of looking at the glass is half or glass is full, which add new dimension to the thinking of all the participant, and also giving various light about the various dimension of new education policy. It's truly a privilege to attend this session. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, all of you. Thank you, everyone. Sir, can we ask everyone to please switch on their camera for Yes, the yes. screenshot? Yes, sir. All participants are requested to please switch on your camera. Thank you so much, everyone. And sir, Thank you. there is a request from some few participants who are saying that Yes, they have missed the attendance of yesterday. They not marked. So link is open or what? Actually, yes, sir. Link is now open, but I will take attendance from Zoom also. So we Okay. can Okay. compile both of them. So not an issue. So if they are joining the Zoom also and just submitting the form, so we can compile from both of them. ठीक है थैंक यू ठीक है Okay, sir. है ना Thank you दो so तीन much, all of क्वेरीज थी हाँ रश्मि जी की क्वेरी थी और एक दो और लोगों की क्वेरी थी ठीक है Yes, थैंक sir. जी सॉरी Even tomorrow, I have not submitted the attendance. I couldn't find any sort of link for submitting the very same. Actually, ma'am, tomorrow I was sent at 4:45 p.m. It will be open to 5:15 p.m. Actually, we are just sending the link at the last 15 minutes of the session. But not an issue if you are attending the complete lecture from the 2 to 5 p.m. So we will also get the attendance from Zoom also. So not an issue for that. yes we will be taking both the things the Yes, attendance yes, as well sir. as the Zoom screenshot okay yes Okay, ma'am. thank you everyone thank you जी sir thank you we can wind up we'll meet on Monday कल तो नहीं है ना sir session Yes, yes. Tomorrow is no session. yeah so Sunday is off for everyone Yes. so Happy please be weekends to relaxed all. okay Okay, okay. so Okay, thank meet on Monday thank you everyone you. bye bye